progressive, vibrant, and ever-evolving city of Noida. I'm sure that all of us have some memory from Noida, eating golgappas at the market nearby, or perhaps going to the film city and looking at the studios that we have here. Today, we are honored to welcome a distinguished guest of panel and experts, industry leaders and policymakers, who will delve into the challenges and opportunities shaping the MSME ecosystem in and around Noida. We are delighted to have you all at the ET India SME Regional Summit, Noida edition. This is the first time that we are hosting this summit here right itself in Noida, and we are very happy. We are literally placed home 5 minutes away. The entire team is also happy about it. Uttar Pradesh, with its nearly 90 lakh MSMEs, has become a thriving hub for innovation and entrepreneurship. The state government has implemented numerous initiatives to support MSME growth, including improved access to finance, infrastructure, and the development. We also have skill building programs and enhanced ease of doing a business. The Noida edition of the ET Make in India Regional Summit is a celebration of the achievements of these businesses. It aims to provide a platform for knowledge sharing, networking, and preparing the MSME sector to compete on a global stage. I would also like to tell all of you that this entire event is being live streamed as well on ET Digital channel. I request you all that you please make sure and you tune into that. It's also available in all 9 languages online, the post-event coverage. And I would like to name all of them: ET English, ET Hindi, Marathi, Gujarati, Kannada, Malayalam, Tamil, and Telugu. Let us celebrate the confluence of ideas, insights, and impact right here at the Noida edition of the ET Make in India MSME Regional Summit, an economictimes.com initiative, supported by the Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises, Government of India. Our partnership for the event are with IDBI Bank as our lending and banking partner, the New India Assurance Company Limited as the general non-life insurance partner, Canon as the technology enabler, and CRC as the reality partner. A huge round of applause for all our partners tonight. We at economictimes.com started this journey in 2023 across the key SME hubs in India to unravel the stories of entrepreneurship. Till date, we have completed 30 such conclaves across the country. And today, ET is proud to be in Noida. We are privileged to have a distinguished panel of subject matter experts and industry stalwarts, and I'm sure that you are all looking forward to learn from them. Each edition of the Economic Times Make in India Summit brings together a powerful mix of ideas, insights, and inspiration for small business owners, from decoding government policies and financing opportunities to exploring innovation, insurance, technology, and growth strategies. Adding to this momentum, we have with ourselves tonight actor and humanitarian Sonu Sood, who joins the summit for a special session on how businesses can give back to society, a conversation that perfectly captures the purpose and the heart of India's growing MSME movement. Once again, a warm welcome to all our esteemed guest speakers and our audience. We start tonight with a welcome message from Pran Bihanga Borspazari, Senior Associate Editor, economictimes.com. Proud to say he's also our colleague. Thank you, Dhruv. Mr. Gopal Krishna Agarwal, National Spokesperson, Bharatiya Janata Party. Mr. Sonu Sood, actor, producer, and philanthropist. Mr. Nagraj Gala, Executive Director, IDBI Bank. Ms. Smita Srivastava, Executive Director, the New India Assurance Company Limited. Sponsors, ladies and gentlemen, entrepreneurs, policymakers, and friends, good evening. It was maybe the second or the third day of lockdown in 2020 when I decided to step out and see what was happening around us. None of us had ever seen something like this. It was surreal, unsettling, even unreal. My plan was simple: drive around and probably go to the Noida SEZ complex and take a few photos of the closed factories and silent industrial units.
But as I drove out, what I saw was heart-wrenching. Hundreds of people, these were migrant workers, were walking on the highway. Families, young men, mothers carrying children, people with everything they owned packed into one small bag, walking back to their towns and villages they call home. I had a small bottle of water, which I gave to a couple with a child. And for that moment, I felt I was doing something. But within minutes, I realized it would take thousands of such bottles and 1,000 hands to help even a fraction of those in need. The scale of suffering was beyond anything that I had seen or imagined. And yet, in those dark times, something powerful emerged. People stood up. Ordinary citizens did extraordinary things with no plan, no backing, no safety net, just pure humanity. Mr. Sood is one such example who turned compassion into action, helping thousands of people reach home, find healthcare, and hold on to hope when the nation needed it the most. We often speak about capital, technology, and infrastructure as the lifeblood of entrepreneurship. But the truth is, none of these matter without courage. Every entrepreneur knows that the journey is rarely smooth. There are moments when markets shrink, orders get delayed, banks stop taking calls. In those moments, actually, what keeps a business owner going is not policy or profit, it's purpose. And in that sense, Sonu, he didn't have a large institution behind him, no preset infrastructure, no government machinery. What he had was a sense of purpose, and that turned into a humanitarian effort. Isn't that exactly what MSMEs do every single day? They take limited resources, face uncertain environment, and still deliver impact that touches countless lives. And it wasn't just individuals from the entertainment world. There were also voices from the policy and public life who stood firm and guided the national conversation with clarity and compassion. One such person is Mr. Gopal Krishna Agarwal, the national spokesperson of BJP. A champion of India's entrepreneurial spirit, he's been a consistent advocate for MSMEs, economic reform, and inclusive growth. At a time when businesses struggle to stay afloat, he reminded us that India's economic resilience and strength lies with the small and medium enterprises. His voice has often bridged policy and the grassroots, ensuring that concerns of industry, traders, and entrepreneurs find a way to the national narrative. And that's why today's conversation here in Noida matters so much. Because resilience isn't built in boardrooms. It's built in workshops, in small factories, in ideas born out of struggle and sustained by purpose. People like Mr. Sonu Sood shows us the power of individual action. Leaders like Mr. Agarwal reminds us how policy can amplify that spirit. That is why it's a privilege to be here in Noida, a city that in many ways mirrors the aspiration of New India, bold, ambitious, and forward-looking. When we speak about India's growth story, we often highlight the big metros, Mumbai's finance, Bengaluru's technology, and Delhi's politics. But just across Yamuna, quietly and steadily, Noida has emerged as one of the most vital growth engines of the National Capital Region. Over the last 2 decades, the city has transformed from a planned industrial township into a vibrant economic hub. It is home to some of India's most advanced manufacturing clusters, a thriving IT ecosystem, and a fast-growing creative economy. These are the new MSMEs redefining what made in Noida means. Yet, Noida's story is not just about glass towers or expressways. It's about people, entrepreneurs who took risk, small businesses that created jobs, and young innovators who found opportunities here when others only saw empty plot of land. Let us be clear,
Noida is just not another satellite city of Delhi. It is the balance that makes NCR whole. It brings industrial depth to a region that might have otherwise tilted entirely towards services. It offers planned infrastructure and connectivity that complements Delhi's legacy and Gurgaon's corporate sprawl. The Yamuna Expressway and the upcoming infrastructure around Jewar Airport are not just transportation corridors, they're economic lifelines that will integrate MSMEs, logistics, manufacturing, and services into a seamless growth network. As NCR continues to expand, Noida's success will determine the region's long-term competitiveness. The question then, often asked, sometimes half in jest, and sometimes as a challenge, can Noida ever outshine Gurgaon? My answer is simple, yes, and in many ways it already has. I think this monsoon was a testament to the fact that Noida has the advantage of better urban planning. It has more affordable land, superior infrastructure, and a more balanced industrial mix. While Gurgaon grew rapidly as a corporate and service hub, Noida is now poised to lead in manufacturing, mobility, media, and MSMEs, the very sector that will define India's next growth in the decade. But to achieve this, we have to do more than just building roads and approved projects. We must build ecosystems where entrepreneurs find mentorship, MSMEs access technology and finance, and innovation doesn't just stop at prototypes. Noida must not only be a place to do business, it must be a place where businesses grow together. In Noida's rise, we see a template for India's urban future. Cities that are not chaotic sprawls, but catalysts of balance and high-quality growth. As I conclude, I extend a sincere gratitude to the Ministry of MSME Government of India for their invaluable support in making this summit possible. The continued commitment to empowering entrepreneurs and strengthening MSME's ecosystem has been instrumental in driving inclusive growth. I would also like to thank our sponsors, banking and lending partner IDBI, our general non-life insurance partner, New India Assurance, tech enabler Canon, and realty partner CRC. Thank you, everyone. Have a great evening. Thank you. Thank you so much, Pran. And with that, we are all set for our inaugural address. Please put your hands together for Mr. Gopal Krishna Agarwal, National Spokesperson, Bharatiya Janata Party for Economic Affairs. धन्यवाद। ईटी नाव से आशीष पांडे जी ने मुझे बुलाया और यहाँ पर जिस तरह से मैं कुछ दिनों से यहाँ पे कैंपेन देख रहा हूँ उससे और जो एंथुजियाज़म लोगों का इस समिट के लिए है, तो मैं ईटी नाव को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि फॉर सच ए गुड इवेंट एंड विद द सो मैनी पीपल हियर आई वुड लाइक टू गिव देम अ बिग हैंड अप्लॉज। मेरे साथ स्मिता जी, हमारे सोनू साहब, जिनको देखा जैसे बताया अभी प्रांजल जी ने कि किस तरह से कोविड के बाद इन्होंने आउटरीच का पूरा काम किया है, उसके लिए इनका अभिनंदन। जो IDBI स्पॉन्सर्स हैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मिस्टर नागराज जी और यहाँ पर उपस्थित साथियों, मैं इंस्पायर हुआ जो आपने वेलकम एड्रेस दिया और बड़े चैलेंजेस, चुनौतियां हमारे देश के सामने हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प और रोड मैप गोल हमारे सामने रखा है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के इकोनॉमिक इश्यूज को देखते हुए पॉलिसी इंटरवेंशन के लिए एक ही बात प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी उद्धृत करना चाहता हूं
कि इट इज़ द कलेक्टिव विल पावर. He has set a goal for us, but he has said that it has to be a collective willpower of the people. If all people unite together with a positive attitude और दिल में एक जज्बा लेके आगे बढ़ेंगे, एक स्वाभिमान, आत्मविश्वास, तभी हम इस गोल को अचीव करेंगे. तो मुझे कुछ दो पंक्तियां याद आ रही हैं. बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में मैं जाता था, तो उसमें एक दो पंक्तियां मुझे ध्यान में आ रही है. देशभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों को पार कर राष्ट्र विजयी हो हमारा. इस स्पिरिट के साथ मैं चाहता हूं कि अगर कलेक्टिव जो ये पूरी इवेंट है इसके साथ कुछ लेके जाएंगे तो मुझे लगता है कि जो गोल विकसित भारत का है वो जरूर हम पूरा करेंगे. और जब हम किसी क्षेत्र की, नोएडा की बात हो रही है, गौतम बुद्ध नगर में मैं 1990 से रह रहा हूँ, यहाँ पे हमने कई इवेंट भी किए हैं और उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट से आउटरीच भी साथ में किया है. तो जब किसी क्षेत्र के विकास की जब हम बात करते हैं तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था के साथ अलाइन होकर ही वो आगे प्रोग्रेस कर सकता है. आइसोलेशन में कोई प्रोग्रेस कर सकता है ऐसा नहीं है. तो थोड़ा सा अगर देश अर्थव्यवस्था के रूप में आगे जा रहा है, तो अभी जीएसटी का बचत उत्सव हम सब लोगों ने देखा, दिवाली का उत्सव गया, अभी छठ पूजा आ रही है, नवरात्रि का त्यौहार देखा था, अभी कई रिपोर्ट्स भी हम लोगों ने देखी होगी कि 3 ट्रिनिटी जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बार एक अंडरलाइन करते हुए बताते कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है. उसमें 3 महत्वपूर्ण बात हैं. एक, इस समय इस साल जो बजट में सरकार ने टैक्स का कंसेशन दिया था मिडिल इनकम ग्रुप को, चैलेंजेस को, चुनौतियों को, उसको केंद्र सरकार में आइडेंटिफाई करके उसके लिए क्लियर रोड मैप के थ्रू काम करने का काम सरकार हमारी करती है. तो लगा कि जब कंजम्पशन डिमांड होगी, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा खर्च किया, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हमारे देश के इकोनॉमी के बहुत अच्छे हो गए पोस्ट कोविड लेके, जिस तरह की आत्मनिर्भर भारत पैकेज को लेके हम चले. लेकिन उसके साथ ये ज़रूरी था कि जो हम लोग जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो नहीं आ रहा था, उसके लिए डिमांड क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है. और सरकार ने उसको इस बार बजट के अंतर्गत मिडिल क्लास को एक टैक्स एग्जम्पशन 12 लाख का जो दिया, उसने एक लिक्विडिटी क्रिएट की, उसने एक बेनिफिट मिडिल क्लास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, कंजम्पशन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया. और फिर उसके बाद अभी जब जीएसटी नेक्स्ट जेन 2.0 रिफॉर्म्स जब आए नेक्स्ट जेन के रूप में, उस जीएसटी बचत उत्सव के रूप में हमने देखा कि किस तरह इस बार दिवाली में 5.43 ट्रिलियन रुपीस का जो मार्केट सेल्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स का हुआ, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल था. 25% इंक्रीज फ्रॉम द लास्ट ईयर. सेकेंड इज इम्पॉर्टेंट, कार सेल्स के हमने देखे, टाटा मोटर्स के, हुंडई के, मारुति के, they have increased almost by 33%. Those sales have increased by almost 33%. और जब मार्केट में सर्वे के रिपोर्ट्स में जब सरकार के और प्राइवेट थिंक टैंक्स वगैरह के लोगों ने कहा, तो व्यापारियों और इंडस्ट्रीज का मत था कि 72% ऑफ दोज पीपल सेड दैट दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ लो जीएसटी रेट, लोअरिंग ऑफ द जीएसटी रेट, एंड 87% ऑफ दोज इंडस्ट्रीज सेड that it is because of the call of Swadeshi, vocal for local. This is also important. People have started preferring, because the Prime Minister said that we should go for local products, Swadeshi product के लिए. तो यह एक दूसरा बात था. और तीसरा उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं, IDBI से भी यहाँ है, जिस तरह इन्होंने बताया, यहाँ पे भी बहुत से लोग हैं जिनको क्रेडिट इनने कहा कि within 15 minutes we are ready to give, we have been giving credit for collateral free to MSME. तो उसमें एक फिगर और आई थी कि RBI की रिपोर्ट आई थी कि from 20th September to 2nd October, that 15 दिन के अंतर्गत लगभग 3.63 लाख करोड़ का क्रेडिट ऑफ टेक हुआ, which was more than 3 times which in the previous fortnight. तो ये तीनों एक तरीके से बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था
अच्छी तेजी से बढ़ रही है। और यह इसके साथ जब हम देश की अर्थव्यवस्था को देखते हैं, देश की इकोनॉमी को, ग्रोथ को देखते हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात मुझे उत्तर प्रदेश की लगती है कि अगर हम नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें, प्रोपेल कौन सा प्रदेश इकोनॉमी को देश की प्रोपेल कर रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण इस समय हमें लगता है, और आप सब भी इससे एग्री करेंगे, कि उत्तर प्रदेश इज ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम टू द is between 7 to 8 hours. Second, educational ऑन बोर्डिंग ऑफ एमएसएमई के लिए पर्टिकुलरली सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास करे कि ओएनडीसी जेम में प्रोक्योरमेंट तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के और जो अलग अलग पीएसयूज वगैरह के तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स देने हैं, वह भी सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। साथ में ये इनिशिएटिव भी है जो जी
real life. Sure, keynote address. From arranging transport for stranded migrant workers, to airlifting students from abroad, to setting up oxygen plants, hospital beds, and life-saving medication. Sonu didn't just lend a hand, he gave his heart. He answered thousands of calls, messages, and pleas, day and night, not as a star, but as a son of the people. His initiative helped over 7.5 lakh migrants reach home safely. He provided free surgeries, scholarships, and even opened a helpline for anyone in distress. They called him Messiah of migrants, but he humbly said, "I'm just doing my duty as an Indian." मुझे लगता है कि ज़रूरत बहुत है और मदद करने वालों की। This wasn't for fame. This was for faith. Faith in humanity. Faith in kindness. But Sonu Sood was already a star on screen. But off screen, he played the greatest role of all, a real-life hero. This is not just a story of an actor. It's the journey of a man who chose humanity over headlines. Sonu Sood, the hero we didn't ask for, but the one we all needed. आपने किसी की इच्छा और जुनून होना चाहिए रास्ते को बदलने का। Hi, good evening, everyone. And sir, thank you so much for enlightening us about the great work that you all are doing, and this state looks amazing. I'm from Punjab, wanted to become an engineer, came to Nagpur, finished my engineering, then came to Mumbai without even knowing a single soul, and wanted to become an actor. Did many films in different languages, Tamil, Telugu, Kannada, Marathi, Chinese, a lot of languages, and I thought that, becoming famous was one thing that I always wanted to do, and it happened. And actually, that was not the real goal. The real goal was one that I discovered when I connected with the common man. COVID was something that actually made me realize that life is not about light, camera, action. It's about when there are no lights, no camera, just action. How an individual living in a small village somewhere in Andhra, Telangana, UP, Bihar, Punjab prays for you, wishes for you, and puts a hope that, someone can come and change his life. I remember when I was sending people back to their homes, almost close to 7.5 lakh people got connected. हम लोगों ने उनको घर भेजा. जब वो घर गए, तो वहाँ से आने लगे, यार मेरी मदर बीमार है, उसका कुछ ट्रीटमेंट करवा दीजिए. तो हमने ट्रीटमेंट करवानी शुरू किया. I started getting connected to doctors, to hospitals, कि भैया आप करवा दीजिए ट्रीटमेंट. तो मैं कभी बाहर भी जाता था, तो जहाँ पे मुझे डॉक्टर या हॉस्पिटल वाला मिलता था, मैं फटाफट उनका नंबर लेता था. कहाँ से है? मैं दिल्ली से हूँ, मैं विजयवाड़ा से. तो उनके नंबर्स लेने शुरू हुए, वो नेटवर्क बनना शुरू हुआ, एंड वी स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ पीपल ट्रीटेड. जब उनको जॉब्स की जरूरत पड़ी, उन्होंने बोला, यार सुनो, हमारे पास जॉब्स नहीं, आपने भेज तो दिया यार, कहीं ना कहीं जॉब्स दिला दो. देन आई स्टार्टेड गेटिंग कनेक्टेड विद अगेन लॉट ऑफ पीपल, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एक्सपोर्टर्स, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में. तो जब उनको जोड़ना शुरू किया और एक अलग नेटवर्क बनना शुरू हुआ कि कैसे जॉब्स दिलाने शुरू करने हैं, तो आई क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म व्हिच वाज कॉल्ड प्रवासी रोजगार, कि उनको रोजगार कैसे दिलाया जाए. देश के लाखों लोग उस पर जुड़े. And I remember a lot of big companies, big corporates started connecting with me, so we want to join hands with you, और कैसे हम इसको बड़ा करें. And I was fortunate enough कि उस समय सिंगापुर की one of the biggest names, Temasek came on board, और उन्होंने साथ जोड़ा, and the company became good worker, जहाँ पे हम लाखों लोगों की
जॉब्स क्रिएट कर पाए, बहुत कुछ कर पाए। तो अगर आप उससे कुछ साल पहले पूछते कि जॉब्स कैसे क्रिएट करनी, कैसे उनको बिजनेसेस में हेल्प करना, मुझे नहीं पता होता। मुझे बोलता है यार मुझे फिल्म्स के बारे में पूछो तो मैं बता सकता हूँ। तो मैंने कहीं पढ़ाई नहीं की थी इसके बारे में, never actually studied how to make things happen. How it happened was that I thought, okay, let me try. I might fail, but again, I have to keep on trying, and this is how the roadmaps started forming. मुझे लोग जुड़ने शुरू हुए when they realized कि कोई इंसान किसी की भलाई करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, सो बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी इच्छा के, all those verticals started connecting and we became a big institute जहाँ पे अगर आप किसी को जॉब की बात करें 1 घंटे में जॉब मिलता था, किसी को इलाज की बात करें तुरंत बेड मिलता था, किसी को मेडिसिन की बात करें तुरंत मिलती थी. सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली started getting happen. मुझे बड़े जब ब्रांड्स किसी चीज़ के लिए फ़ोन करते थे कि we want you to be a brand ambassador and when you used to negotiate, so मैं बोलता था मुझे मत पैसे दो, एक काम करते हैं चलो 200 लोगों का इलाज कराते हैं, चलो 100 लोगों के घर बनाते हैं, किसी को ट्रैक्टर्स देते हैं कुछ. सो देन दे आल्सो स्टार्टेड कमिंग ऑन बोर्ड कि यार जब यही नहीं मांग रहा तो क्यों ना दूसरों की हेल्प करें. सो द बिगेस्ट लेसन दैट आई लर्नड वाज दैट द पर्पस इज द न्यू प्रॉफिट. जहाँ आपका एक पर्पस जिंदगी में मिल जाए कि यार मुझे ये करना है, वहाँ पर फ़ायदा होना शुरू होता है. आई रिमेंबर देयर वाज अ गाय विजय रेड्डी इन हैदराबाद. उनका एक फास्ट फूड सेंटर की छोटी सी ठेला था जो उतना नहीं चलता था और समवन कनेक्टेड की सो भाई इसको हेल्प करो और मैंने उनको राशन पानी भेजा कुछ 10-12 दिन. उन्होंने उस ठेले का नाम रख दिया सोनू सूद फास्ट कॉर्नर. और फिर जब उन्होंने नाम रखा तो वो कहीं ऊपर वाले की दुआओं से चलना शुरू हुआ. जहाँ पे वो 40-50 किलो राइस बेचते थे वो सीधा 200-250-300 पे आ गए. और फिर मैं जब गया हैदराबाद में मिलने भी गया, मैंने विजिट भी वहाँ पे किया, अच्छा नाम हुआ. आज उसने अपने 3 शॉप्स बड़ी खोल ली हैं वहाँ पे हैदराबाद के अंदर जहाँ पे बहुत तगड़ा काम करता है. एंड आई रियलाइज कि अगर शायद वो मुझ तक नहीं पहुँचता या मैं उस तक नहीं पहुँचता, शायद ये कभी बढ़ ही नहीं पाता. सो द moral of the story was कि when you try to help someone who's not capable to reach his goals but has an idea, एक thought है, so then the real journey starts. वो कहते हैं ना कि आप अपनी ज़िंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डालो, फिर देखो आपका नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा. So it's very important to make things happen for others. आज हम SMEs की बात करते हैं, किस तरह जो कम्युनिटी बिल्ड होती है उनकी. एक थॉट आता है. मैं आज भी मेरे घर के आगे जब कोविड के दौरान शुरू हुए लोग 300-400-500 लोग आज भी कई बार आते हैं और मैं 5-5, 10-10 मिनट सबसे मिलता हूँ आज भी. तो उसके अंदर बड़े छोटे आइडियाज़ लेके आते हैं कि सर ये पढ़ लीजिए. तो 2 मिनट में तो उतना समझ नहीं आता कि बड़े अच्छे आइडियाज़ भी छूट जाते हैं. लेकिन जब आप उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि एक इंसान जो शायद बिना टिकट के आपसे मिलने आया हो, उसके पास शायद टिकट के पैसे भी नहीं होंगे, लेकिन उसके पास एक थॉट, एक आइडिया ऐसा है जो सब कुछ बदल सकता है, जो आपको एक ऐसा आइडिया देके जा सकता है जो शायद आप सोच भी नहीं सकते. सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू एवरी सिंगल डे. मैं जितने भी ब्रांड्स के साथ जुड़ा, जितने भी वर्टिकल्स के साथ जुड़ा, आज दे आर ऑल डूइंग वेल एंड दे वर नॉट माई आइडियाज, दे वर द आइडियाज हु वर इन्वेंटेड बाय अ कॉमन मैन. एक विजन था, एक पर्पस था, एक जुनून था कि ये करना है. नो मैटर इवन इफ वी फेल बट वी हैव टू सपोर्ट दैट. आज अगर अपन AI की बात करें, सो वी ऑलरेडी हैव अ कंपनी कॉल्ड मेगलेडन जहाँ पे नए लोग आए, नए थॉट्स के साथ आए, जहाँ पर आपको हम एड्स शूट करते थे. आज हमें ना तो लोकेशन की जरूरत पड़ती है, ना मेकअप आर्टिस्ट की, ना मेकअप वैन्स की, कुछ नहीं, आप शूट करते हैं एंड द होल एड इज मेड एट अ वेरी चीप कॉस्ट. सो ये जो नए लोग उस कंपनी में जुड़े, दे वर ऑल न्यू पीपल हु आर ट्राइंग फॉर जॉब्स. आई रिमेंबर दिस कंपनी कॉल्ड स्पाइस मनी जिसके साथ हम लोग जुड़े. 10 लाख आज उसके अधिकारी हैं. छोटे से छोटे आप जगह जहाँ पे आपको पता ही नहीं होगा कि आपने उस गांव का नाम भी नहीं सुना, वहाँ पे भी कोई ना कोई बैठा हुआ है. एक वेजिटेबल वेंडर की बात करें, एक छोटा सा किराने वाला जो एक छोटा सा अपना बैंक चलाता है जहाँ पर ATMs के एक्सेस नहीं है, लोगों को यूज़ नहीं करने आते, बट वो वेजिटेबल वेंडर या वो किराने स्टोर वाला जिसका 2-3 हज़ार रुपया बनता था, आज वो 7-8 हज़ार रुपये पे आ गया. तो किस तरह वो बढ़ना शुरू हुआ. तो आइडिया किसी और का था, कहीं हमने हाथ थामा,
कहीं सामने वाले ने हाथ थामा और ऐसे ही रिश्ता जुड़ता गया. सो जब मैं आज भी मिलता हूँ लोगों से, सो मैं बड़ी रिलीजियसली सुनता हूँ. बहुत दफ़ा फेल भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे मुझे याद है कि आइडियाज़ हमने पकड़े भी, न्यू स्टार्टअप्स आइडियाज़ कि हम करना चाहते हैं जिन्होंने, एंड वी थॉट कि वो अच्छे होंगे, एंड वी फेल समटाइम्स. और हमें लगता है कि यार अरे मैंने 2-3 महीने लगा दिए इसमें, हमें मिला नहीं और कैसे आगे बढ़े. एंड देन वी रियलाइज नहीं हमें आगे करना है. सीख जाएंगे, ठोकर खाएंगे तभी सीखेंगे, गलतियाँ करेंगे तभी सीखेंगे. और फिर हमें ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि यार ये आइडिया पे मैंने विश्वास तो नहीं किया था, लेकिन मैंने सिर्फ हेल्प करने के लिए हेल्प किया, क्योंकि मुझे लगा कि इसको ज़रूरत है, इसको हेल्प करता हूँ, चलो देखते हैं क्या होता है. और वो आइडिया बड़ा बन जाता है. आई हैव कम अक्रॉस मैनी सच लाइव एग्जाम्पल्स. I still remember there's a guy who had come to my office. मैं शाम को जब ऑफिस से निकलता हूँ, बड़ी भीड़ होती है लोगों की मिलने के लिए. उसके अंदर वो लड़का था और उसने एक मुझे चिट्ठी लिख के दी और एकदम फोल्डेड सी थी और मैंने अपनी पॉकेट में रखी. और जब मैंने गाड़ी में चलते चलते खोला तो उसके पास कुछ आइडियाज़ थे कि सर आप फिल्म लाइन के अंदर हैं, पोस्ट प्रोडक्शन के आपके बेस्ट ऑफ सेटअप्स हैं, हम लोग कैसे इसके अंदर जुड़ सकते हैं. मेरा एक थॉट है तो आप उसको एक्सप्लोर कीजिए. वो असम से कहीं से आया था लड़का. सो नाउ ही इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, जहाँ पर वो पूरी पोस्ट प्रोडक्शन की दुनिया रन कर रहा है. जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लोग लगते थे, उसमें कम लगने शुरू हुए. इनफैक्ट द अदर पीपल आर आल्सो ट्राइंग कि कैसे रहे हो. सो द लर्निंग दैट आई हैव गॉट, एंड इवन आई टेल माय किड्स ऑल्सो, कि आपको पता नहीं कि आपकी ज़िंदगी कौन बदलता है. आपको लगता है कि यार मैं एक बड़े प्रोड्यूसर की, बड़े डायरेक्टर की एक फिल्म करता हूँ, वो 1000 करोड़ का बिजनेस करती है और मेरा नाम बड़ा होता है. आप विश्वास कीजिए कितने भी बड़े बॉक्स ऑफिस नंबर का आप हिस्सा बन जाएं, लेकिन जो दुआओं में असर होता है, जो उसमें ताकत होती है, वो किसी भी बॉक्स ऑफिस नंबर के बराबर नहीं हो सकती. द काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट यू गेट in on bringing a smile on a unknown face is what matters. वो कहते हैं अगर आपसे किसी को उम्मीद ही नहीं तो आपका जो जीवन है अधूरा है. आप कितने भी बड़े गाड़ी में घूमिए, कितने भी बड़ी इंडस्ट्री में घूमिए, जब तक आप एक नए आइडिया को अपने साथ जोड़कर उसको बड़ा नहीं करते, आई डोंट थिंक सो यू कैन कॉल योरसेल्फ अ सक्सेसफुल इंडिविजुअल. सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लेगेसी को छोड़े. जब मैं यहाँ पर होता हूँ या ट्रैवल करता हूँ, सो आई ऑलवेज आस्क माय किड्स कि यार तू मिलता रहे, तू नीचे लोग आते हैं उनसे मिल, उनके आइडिया सुन, उनके थॉट्स सुन. यू नेवर नो कि कौन सा इंसान आपको क्या सिखा कर चला जाएगा. सो आई थिंक द बिगेस्ट lesson that I have learned, and I keep on remembering every single day, is you have to be a learner. It's not important that you are an MD of a company or you are a founder of a company and you are a multi-billionaire in the system, but still a normal employee can teach you the biggest lesson of your life. So always be sometimes a leader, but a good learner, a backbencher, and listen to those people. Sometimes an individual should have the guts to say that. कई बार हम ऐसी कंपनीज और इस पोजीशन पे होते हैं कि नए लोग हमें बताना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर वो ताकत नहीं होती बताने की, यार कि मेरा बॉस मुझे डांट ना देगा या मुझे कहेगा ये क्या बकवास आइडिया लेकर आ गया या मुझे नहीं सुनना. सो आई थिंक दैट्स वन वेयर वी फेल. जो हम लोग कर सकते तो कर नहीं पाए क्योंकि हमने वो आइडिया सुना नहीं, या फिर सामने वाले के अंदर हमने उतनी ताकत नहीं दी कि वो हमारे से वो आइडिया शेयर कर सके. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू be a hope for someone where you can tell कि boss I am very much accessible, आपके पास कोई भी आइडिया है प्लीज़ मेरे से शेयर करो, we'll discuss and then we'll try to create a new ecosystem. आज जो हम लोग, अगर हम कुछ साल पहले AI की बात करते तो मुझे लगता है लोग हंसते, लेकिन आज आप देखिए कि AI क्या कुछ कर रहा है. Every day being a part of the system also, still we get those surprises every single day कि कैसे करें. So I think that is very very important to make that happen. और फिर एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि जो हम लोग हेल्प करते हैं, हम बोलते हैं कि मेरा जो फील्ड है एक्टिंग का फील्ड है, अगर आपको डायरेक्शन में आना है, आपको एक्टिंग में आना है, आपको कैमरा वर्क में आना है तो आप मुझे बताइए, मैं कर दूंगा. अगर आप मुझे एजुकेशन बोलेंगे, यार एजुकेशन तो मेरा फील्ड ही नहीं है, इसमें मैं कैसे हेल्प करूँगा. नहीं, आप कर सकते हैं. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. मैं गुवाहाटी के अंदर कुछ समय पहले एक ऐसे ही एक इवेंट के लिए गया, तो मैं अपने रूम के अंदर बैठा था और मैंने अपना जो सूट था वो आयन करने के लिए दिया. तो ये जो बंदा आयन करके होटल का बंदा आया तो उसने मेरी पॉकेट के अंदर एक छोटी सी स्लिप और अपना नंबर डाला और बड़े डरते डरते उसने बोला, सर मैं
सर इधर ही काम करता हूँ और मैंने अपना नंबर आपकी पॉकेट में डाल दिया है। जो मेरी डॉटर है वो उसने अपनी पढ़ाई कर ली है और वो जॉब ढूंढ रही है कहीं एजुकेशन का, अगर उसको पढ़ाई का जॉब मिल जाए तो कहीं पढ़ा सके तो बड़ा अच्छा है। वी आर इन अ वेरी टाइट सिचुएशन और हमें पता नहीं आगे कैसे बढ़ना है। सो जैसे मैं ऐसी स्टेज पे गया तो मैंने सबसे पहले वहीं से शुरू किया कि आप में से एजुकेशन बैकग्राउंड के कौन है, तो 5-6 हाथ खड़े हुए कि हाँ मैं। तो मैंने बोला कि यार अभी ये मुझे नंबर मिला है और मुझे लगता है कि वो बहुत डिज़र्विंग है और आप उनकी इंटरव्यू ज़रूर लीजिए और अगर आपको लगता है वो डिज़र्विंग है उसको जॉब दीजिए। तो उनमें से जो एक लेडी एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी रन करती थी, कहती सोनू आई प्रॉमिस यू कि शी विल गेट ए जॉब। और अगले दिन जब मैं गुवाहाटी से बॉम्बे पहुंचा तो सुबह जब मैं फ्लाइट मेरी लैंड की तो लेडी उस यूनिवर्सिटी में बैठी थी, उसके सामने उसने मुझे वीडियो भेजा और उसने बोला कि शी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड शी इज़ ऑलरेडी जॉइंड अ यूनिवर्सिटी, शी इज़ गोइंग टू टीच। सो अपने आप हो गया। मुझे ऐसा लगा कि जब मैं गुवाहाटी गया था शायद उसकी जॉब लगवाने के लिए गया था। सो आई फील इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब भी कोई भी इवेंट में जाए, फंक्शन में जाए, आज इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, दे आर ऑल अचीवर्स गोइंग टू अचीव लॉट ऑफ थिंग्स, वो नेटवर्क वर्किंग बनाइए जहाँ पे आप बोलें कि चलो यार कैसे मदद करते हैं। एंड आई एम वेरी मच एक्सेसिबल, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। द होल टीम हैज़ माई नंबर फॉर एनी आइडियाज़, जहाँ पे मैं सीख सकूँ आपसे, जहाँ पे आपके साथ जुड़ सकूँ, कैसे बड़ा कर सके। सो आई थिंक ये शाम तभी कामयाब हो पाएगी जब हम लोग और एक नया वर्टिकल, नया मुस्कान लेकर आएंगे। एंड लाइक आई सेड कि जब आप अच्छा काम करने लगते हैं बहुत सारे लोग आपके बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे, नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन रुकना नहीं, चलते रहना है बस। आई वांट टू एंड अप विद अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि तू अपनी खूबियां देख, खामियां निकालने के लोग हैं ना, कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना, तू अपने अंदर एक जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए तो लोग हैं ना, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना, तो अपना एक मुकाम बना, भीड़ में चलने के लिए तो लोग हैं ना, करना है तो कुछ ऐसा करके दिखा कि सारी दुनिया देखे, क्योंकि तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना। And all the best and God bless you and let's bring many more smiles together and all the best. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, Sonu sir, for your inspiring speech. I would request all our speakers to come on stage for a photograph. We would like to capture this memory for all the viewers and online. Please, I request all our speakers to come on stage. सोनू सर, एक छोटा सा सवाल है, मैंने कहा मौका मैं ना छोड़ूं कि ताली तो बजाने के लिए लोग हैं। एक ये है कि जैसे अनफॉर्चुनेटली क्लोन नहीं बन सकते साइंस के हिसाब से, ठीक है, आप आज तक का ब्रेन ले सकते हो पर आगे आप कैसा बिहेव करोगे ये नहीं कर सकते। लेकिन जैसा आपकी पर्सनैलिटी से लगा कि नेशन फर्स्ट वाले लोग हैं आप लोग, देश पहले, ठीक है ना, तो ऐसे लोग बॉलीवुड में नहीं पूरे भारत में और कैसे प्रोड्यूस हों, इसके लिए कोई फोरम बने, आप जैसे लोग कैसे बने। सर मुझे लगता है मेरे से बेहतर लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं सर सब। So I think this नहीं, is यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ नेशन फर्स्ट। कोविड में दुनिया ने देखा, हम भी आज तक भी देख रहे हैं, जैसे आप अपार्ट फ्रॉम सेलिब्रिटी जो एक होता है कि यार देश के लिए टाइम निकालना ही है, कंट्री उठेगी सब उठ जाएंगे, ये वाली फिलोसफी के लिए हम सबको काम करना है, सोनू जी की तरह काम करना है। इस बात के लिए एक बात आ गई। थैंक यू। थोड़ा सा सर चांद की तरह बना दें तो सब लोग आ जाएंगे। कुछ सर आगे आए थे, कुछ लोग आइए, आप आइए सर, आइए सर, इधर आइए, आइए थैंक यू सर।
Okay. Well, I'm sure that you enjoyed this particular movement, and that is what we are all about, movements that you can absorb and learn from. And while we had this friendly right now, and I'm sure that you all enjoyed it, our very efficient team has set up a fireside chat. माहौल तैयार है, शुरू करते हैं. Now this is a fireside chat with Mr. Nagaraj Garla, Executive Director, IDBI Bank, who will be here to discuss how IDBI Bank is spearheading MSME growth in India at large and of course in Noida. And to have a discussion with him, I would like to invite on stage Mr. Pran Vihanga Bosudari. Please, Nagaraj sir, please come on stage. Great. Thank you, Dhruv, again. I think after that wonderful sessions on policy, on purpose, I think let's get down to a little specific on finance. And what better place to ask a banker? My first question to you would be, the GST framework. We've all heard, we've all seen, and we've all experienced that, it continues to evolve, and we're seeing greater financial formalization of MSMEs. From a banker's lens, how has this improved the visibility and creditworthiness of small enterprises? And what kind of opportunities does this provide a bank like IDBI? Absolutely. Good evening, everyone. At the outset, I would like to congratulate the ET team for organizing such a wonderful event here, especially in their own place. So their office is next to here. I think they've conducted almost like 30 MSME events, which is very important because even today, though, media has taken a lot of responsibility in educating what is available for MSME, I think still many people don't know. So I think this, the initiative of Times will go a long way in creating empowerment for many MSMEs. Coming to your question regarding GST, undoubtedly it has helped in formalization of a credit. So if you remember correctly, before 2017, most of the MSMEs, even if they are doing a business, even if they are growing, they were actually resistant to show real turnover in their books actually. So, may 100 rupees kiya to just I want to show only 1 rupee or 10 rupees. So, why? Because of various issues which we cannot discuss now. But after GST, I think a lot of things have changed. It has helped to formalize the credit. And actually, so there is a benefit of input credit. So, GST, after introduction of GST, if you show more turnover, you will get more money from the government. It is like an input credit. So whatever I have paid, I will get it back. So it makes sense to show more turnover. So books are transparent now, and actually we have been discussing actually collateral-based lending or balance sheet-based lending. After introduction of GST, because data is available, we know how much, what sort of business MSME unit is doing. So it becomes relatively easy for us to assess a credit worthiness of the customer, what sort of business he is doing. So what I want to say is that it has moved from virtually from balance sheet lending to cash flow lending. GST is the starting point. So if you see numbers, so on this we can talk, but if you see numbers, before 2017 and today, almost registrations of MSME, or it is almost like a 3x. So most of them have shown interest to register as a unit. So registrations are almost up by 3x. And in terms of MSME credit, which was actually growing by 8%, today it is growing after the introduction of GST, 19%. So that means it is like a 2x, 2.5x it has helped us to take a better decisions basically. So what I want to say is GST has helped as far as banks are concerned. We can take insightful decisions rather than based on a gut. So that's what it has helped actually. So. Right.
So next question would be, things have evolved, needs have evolved, and SMEs today expect more than just loans from a bank. They want banks to help them in probably say technology integration, faster turnaround, advisory support. How is IDBI adapting to all these changes, and how do you respond when an MSME says that ye dil mange more? Absolutely. Yes, I absolutely agree with you here. Lending is it is one of the components. See, coming to larger units, anyway, will have a time, energy, money to spend on a digital adoption. When it comes to MSMEs, they will not have a time, energy, and they will have other requirements actually. So for this only, what we have done is digital adoption. Adoption is very, very important. So we have customized products wherein actually just if they take IDBI bank product, they need not spend on tech part, on a larger portion of their business, not on everything. Say for example, say you are running a particular school or college or hospital or a hotel. So we have developed a particular package which is customized only for that particular business, wherein actually we capture everything A to Z relating to their receipts, payments. Virtually, they need not maintain anything, including cashier. So that sort of thing we have. So these products are mainly developed to help digital adoption of our MSMEs. So, and most of it is available, it is virtually free, just to encourage our customers to be part of this one. So this is one initiatives which we have taken. And besides lending, see, a lot of people are here, exporters are also, because being close to capital NCR. So, I mean, currency volatility you know very well. So we have a dedicated specialized officers. We will help MSMEs actually to manage their currency risk, commodity risk, as well as interest rate risk. So these are the which value additions in addition to lending. Lending anyway is there, it is a small component. But in addition to this, we provide all these services together with our specialized relationship managers for MSMEs. Right. So in the early 2000s, you're from Mumbai, but in early 2000s when I shifted towards East Delhi, getting an auto, somewhere towards East Delhi to my house was a major problem. No one wanted to come, cross the Jamna or Jamna par nahi jana hai after 7 o'clock in the evening. And Noida was, even far and beyond East Delhi. So getting to Noida was very difficult. This is early 2000s. Things have changed dramatically now. Noida and the broader UP region now, it's a major industrial hub. It's a startup hub, both in electronics and a lot of other diverse sectors. How is your bank positioning itself to tap into this regional growth story and support the financial needs of the fast evolving businesses? Absolutely. Today, Noida or Gautam Buddha Nagar, has become a magnet actually. So virtually, it was supposed to be satellite town for capital reason. So just to address those problems, areas come. But today, it has become virtually like a growth engine for the entire nation, not only for UP or Delhi. And I mean, it is providing, virtually if you see what we call it as a specific economic zones of North, almost close to 50% is provided by entire exports are happening from Noida, specific economic zones. So that means entire northern part, 50% of exports are happening from here. So today's context, this part of the country, it has become a magnet. So normally if you see any particular area like a Tirupur, for example, it is known for like a garment. Whereas Noida, it is attracting almost all home textiles, garment, auto parts, as well as the food processing industries, startup, new generation IT and IT-enabled services. So almost all, everything, whatever is possible, it is getting attracted. And actually, special clusters have been developed. And the specialized, like a food processing, they have a separate cluster. So that provides a lot of benefits actually. So combined power and close to political proximity,
So all this together, I think area is thriving. I'm sure it will continue to thrive. So for any banker, it is an excellent opportunity to grow in such a location. So we would like to add whatever we are doing, and I'm sure we would like to grow up our business here. Interesting. I think the panel discussion that will happen after this will have this mix of different types of sectors, and it'll be fascinating to hear from them as well. That's why actually next session also I think ET has done a very good job by calling everyone from different industries actually, whatever Yes. is happening here. Yes. So coming back to the digital data trails, we talked about GST formalization, GST, UPI, account aggregators. They're transforming how things are done. How is IDBI leveraging this entire ecosystem to widen credit access while also maintaining a strong risk framework? So friends, all of you know digital infrastructure has tremendously changed during last 10 years. So today I think it is helping us to take a lot of quicker decisions because of infrastructure additions which have come in the recent years. See, for example, 10 years back, we used to take Aadhaar card, Xerox copy I used to keep. Today, what I can do is, if you give a just a number Aadhaar card, I validate whether this Aadhaar card is there or not there. GST returns, if you submit, I can immediately, within no time, I can validate. So every data, whatever we have, whatever you give, PAN number you give, just I validate it. So nothing is this one. So immediately, spontaneously, whatever we get a data from MSME, it is validated. So that is helping us to take a quicker decisions. That's why just now I was telling Gopal Krishnan, we have a products wherein actually quickly we can take a decision that is within a 15 minutes, we can say whether to give or not to give a loan. I think if someone, whoever is sitting here, if they want experience, they can see it is there outside. Just if you give a name of the company, quickly they can say yes or no within a 15 minutes by validating almost like our system will talk close to 75 to 80 websites and validates, and if it is true, then actually sanction is given it to the customer. So I think entire ecosystem, whatever we are saying today, it is helping to create a lot of quicker decisions. Then actually it is also helping us to customize the products based on cash flows of the customer. See, for example, some food processing industries, they require money only for 3 months in a year. So remaining 9 months, they don't require. So that data for last 3 years I can capture. So in the month of say October to December only requires, that time I can increase these limits by 4 times. Remaining 9 months, I can reduce it to almost like a 10% of the credit facilities, which was not available earlier. Second, we continuously, it is helping us to monitor credit, it is like a smartwatch. So AI and other digital tools are helping us to monitor the relationship on a continuous basis. And even a memorandum, which credit memorandum, what we put up internally, it used to take almost like a 45 days to 60 days. So with the use of, say, machine learning as well as AI, now it is cutting down to 3 to 4 hours. So within 3 hours, I can prepare whatever we used to prepare, almost like a 60 days when I joined the bank. So I think those are the enablers which have come through digital infrastructure. So digital trades are helping. Without those things, I think it is virtually impossible to have such a decisions. So theoretically, if, when we're having dinner tonight, it's possible in that 15 minutes for someone to get a loan today? Yes, Possible? absolutely. Ah, wonderful. Great. So my timer says time's up. So last question, the country is aiming for that 5 trillion economy. SMEs are supposed to play a pivotal role in exports, job creation, and innovation. What is your, vision for IDBI's role in enabling that next wave of MSME-led growth? Absolutely. I personally believe MSMEs are very backbone of the country, and actually they continue to play a very important role. I think since no one has such data, just to want to spend 1 minute, I think it contributes almost like a 30% of GDP, 30 crores employment opportunity, almost like a 46% of our exports are from MSMEs. So it is a great story. But I think momentum is there now. Even a PM himself is acting as a brand ambassador for MSMEs. Even Gopal Krishnan in his inaugural address, he was saying Swadeshi movement.
So all these things are likely to help to accelerate MSME space. And all of you know, 2 days back only, some committee which is constituted based on a inaugural address of Prime Minister under leadership of Mr. Rajiv Gauba. So I think they have suggested a lot of recommendations. Even if 50% is accepted out of that, I think MSME space is going to change. So they've also recommended, I think for the benefit of people who are sitting here, they have recommended actually a removal of CSR requirements for MSMEs. That is an important thing, and they want to cut down whatever compliances, almost like a 1,400 compliances which are to be complied today. They have recommended removal of that. And one more great thing is that today, without collateral, CGTMSC, based on CGTMSC, banks are permitted to lend up to 10 crores, and for startups it is 20 crores. So they have recommended without collateral, if a business is very good, so banks can lend without collateral from 10 crores to 50 crores. So even if it is accepted up to 25 crores also, I think entire space will change. So if as long as MSMEs are doing good business, as long as they are doing good, I think as a banker, we will be more than happy to associate with them and actually grow our business also along with them. Perfect. I think on that positive note, thank you so much for speaking to us, Mr. Gala. Thank you. Thank you so much, Mr. Nagaraj Garla, for your insights. And now that we have a lot of momentum on our fireside chats, we would like to continue this series. Next up is a fireside chat which is moderated by our very own Neha Diwan. May I request Ms. Smita Srivastav, Executive Director of the New India Assurance Company Limited, to join us on stage for this chat on how New India Assurance is empowering MSMEs through comprehensive insurance, bridging the protection gap. You have 15 minutes for this. Please welcome him on stage. Thank you, Dhruv. Good evening, ma'am. It's great to have you with us here. And let me just get straight to the questions. Yeah, thank you. Yeah, I'll just get straight to the questions. And since it is a very important topic as well, insurance and the MSME sector. So we've been talking a lot about Noida's potential as a lucrative hub for businesses. And Noida and Greater Noida, they are rapidly transforming into high-growth industrial zones. And we've spoken a bit about it across electronics, manufacturing, and logistics. So what are the key business risks you think are emerging in such fast-expanding clusters? And how is the New India Assurance helping MSMEs anticipate and mitigate them? That's a wonderful question to start the session with. But before I answer you, Neha, good evening. And it's such a pleasure to be here today in Noida, a region which is truly representing the pulse of India's entrepreneurial energy. And my namaskar to all the innovation faces here, the MSME owners, the policymakers, and the industry partners who have been driving India's next wave of growth. And when we talk of growth, we are not only talking about resilience, but we are talking about protecting dreams, livelihoods, and resilience of people, all you people who are driving India's economy forward. So as the largest non-life insurance company in India, New India has been walking alongside thousands of MSMEs
in their journey of growth and resilience. And sorry, coming back to your question, I would say that Noida and Greater Noida, both being part of the national capital region, have actually evolved into a major hub, an industrial hub where ambitions, innovation, and enterprise converge. And as ma'am, you said that a lot of growth has happened in this area in electronics, EV, green technology, knowledge parks, but with rapid growth come new types of risks which are more complex. The major risks that the MSMEs in Noida are facing today, one is asset concentration risk first. This is happening because very high value industries, outlets, traders, they are all put together in very close-knit areas. And one event of a fire, an explosion, flood, or even earthquake can bring about unaccountable damages. And there's also a new concept of flooded, what is it called? Factories which are on top of one another. Flatted, right, thank you so much, yeah. Flatted factories. Now, while flatted factories are a good space rationalization idea, they are putting one industry on top of the other. And while it would be good real estate policy, but for insurers, it's a bad risk because, as I said, one event of a loss will affect all of them together. The second risk which MSMEs in Noida are facing are the supply chain disruptions, because most MSMEs work on near-time manufacturing. So if there is a breakdown in their supply chain or the raw material coming in because of a natural calamity in the transport road that they are taking, it will affect their business. The third is cybercrime and digital data breach. They are becoming so more and more rampant, even with very well-established corporates. That is, again, something we have to look very closely at. Because if there is an e-commerce company, an MSME, and if their data is breached, the kind of problems that you face as third-party liabilities, getting back your data, the ransomware attack which can come. And finally, and most important, is the environmental and climate change risk which the MSMEs are facing. Flood, high temperatures, unseasonal rainfall, and now that we are seeing pollution-based shutouts. So when the pollution level rises, there are many industries which are shut down. So these are all affecting the way MSMEs do business in Noida. Now, how New India Assurance is looking at anticipating and mitigating these losses. So there's not much time. I'll be very, very swift. We have an Udyam policy called Bima Sathi. It's a sector-specific product. It gives you a lot of leeway to customize as per the risks that you are seeing. So this policy has only one compulsory section, and there are 9 risks from which you can choose what your particular business is being affected from. Then there's another product that we have come forward with. It's called Nishchit Suraksha. It's a parametric insurance. So if you understand insurance, insurance traditionally is about indemnity. With coming of parametric insurance, it's a paradigm shift in how we are looking at risks. And therefore, with predefined weather parameters, if there is any change or when a particular parameter is met or exceeded, automatic payouts go out from the insurance company to the insured. So that is again something which all MSMEs should think about. We have 2 policies called Bharat Sukshma Udyog Suraksha Bima and Laghu Udyog Suraksha Bima. The first one covers sum insured up to 5 crores and second up to 50 crores. Then
as Neha asked, that what else are we doing apart from offering insurance? So our company has a very dedicated team of risk inspection engineers. They're all qualified engineers, about 100 in our company, and they will look at your factory, they'll look at your risk, give a risk inspection report, they'll do fire audit for you, and also guide you through the risk management journey. Now, risk management is something which insurers look very closely at. They identify the risk for you, evaluate it, tell you how to mitigate it, how to transfer it, and then evaluate whether what you're doing is right. Okay. Right, so as you mentioned that there are a lot of products which you've tailored to specific needs of MSMEs, and I think that is one thing which they struggle with, because a lot of times insurance products are not tailored to their specific needs as enterprises. On a related note, you outlined some of the risks. MSMEs in regions like Uttar Pradesh often operate with limited risk buffers. So how can business insurance imply not just like protection after loss, but as a tool for operational resilience and continuity planning when it comes to such businesses? Okay, so here I'd like to tell the audience that business insurance is not limited to being a post-loss compensation tool. Business insurance should be seen today as a strategic enabler for continuity. So what an insurer like New India does, there's one product which is called Business Insurance Loss of Profit Policy. Now, if there is a loss in your factory, God forbid, then the loss of profit is covered by this particular insurance, and it provides very quick cash flows and keeps the operations and the salaries of employees and standing charges flowing. So rather than, you getting a setback or you finding that you are near being decimated, this insurance helps you to get back on your feet. We have cyber insurance for companies for any cyber attack. We have credit-linked insurance covers, and our company has partnered with banks and NBFCs, where MSMEs, when they go for working capital, automatically get insurance cover. And just to take a little bit of your time, there's something called an agreed bank policy in our insurance product. With this particular cover, the banks or the lending institutions are sure that if a loss occurs, then the insured amount will come directly to them from the insurance company, unless they give an NOC that the payment be made to the insured. So when the bank is confident that at the time of loss, they are going to make good the money that they have given as a loan, they will give you better credit facility, they will give you more loans, and this is how we help. We have tie-ups with four nationalized public sector banks, 4 private banks, and 30 regional banks, which covers a lot of credit loans for MSMEs. Another thing that we do is we offer employee benefit policies. One is group Mediclaim policy, group personal accident policy, and employees compensation policies. That is, if there is an injury or death or an occupational disease which is arising out of and in course of employment, insurance takes care of that. So in this way, ma'am, we see that MSMEs which work on very thin margins and limited liquidity are supported by insurance policies. Right, and as you said, it's a change of, it also implies a change of mindset where it is not seen just as protection, but also how they are being more resilient as far as the businesses are concerned. Yeah. I would like to say that usually insurance is perceived as an expense, but times are changing.
insurance should not be seen as an expense, but an investment in continuity. And if you have any questions, my team is here, I'm here, my numbers are available with the organizers. We'll be really happy to help you in your endeavors and your journey that you take for the country. I'm sure you're going to get more queries during dinner. But moving on, I want to ask a bit about the new evolving needs of some of the newer sectors which are coming up within MSMEs and some of the newer categories which are coming up. So from traditional coverage to newer products like cyber, environmental, or business interruption insurance, how is the New India Assurance bringing up products which stay ahead of these evolving needs for MSMEs? So your query is about climate change and cyber and environmental compliance? Yes. What kind of newer products are coming in to meet these evolving needs? Okay. So, we are all entering into a new era of risk, and the landscape of the risk that we face is changing very, very fast. And as ma'am said, climate, cyber, and compliances. These are the new frontiers that MSMEs have to navigate. And New India Assurance, we are coming forward with helping you with this. So one is for cyber, we have both retail and commercial cybercrime prevention policies. And if a cybercrime occurs and your data is breached, our company comes forward to help you regain the breach data, also pay for all the legal expenses for any third-party liability because of the data being breached, also helps you to regain your brand name, which can get a bit, blackened because of the data breach. Apart from that, we are also for compliances. That was one thing that you were talking about. There are a few compliance like environmental responsibility. So there is a Public Liability Insurance Act 1991, which has been amended in 2024, where the government protects people from injuries, death, or any third-party damages which can happen because of usage of any dangerous or hazardous goods. So earlier, the cover was only for one accident, 5 crores. That has been significantly improved to 250 crores. And in 1 year, it was 15 crores, now significantly improved to 500 crores. So our company is there to provide you with insurance for this particular cover. Our company also provides you pollution liability cover. Now, if you are running any industry, any factory, not only in Noida, anywhere in India, always the chance of a gas leakage or something going out from your factory into the environment, which will bring in liability cases against you. You all must have heard about that film, Erin Brockovich. So poisonous material in America had leached into the ground, into drinking water. Or we all know about the Bhopal gas tragedy, when methyl isocyanate leaked into the atmosphere, killing thousands of people early in the morning in Bhopal. We have a policy called pollution control liability, which covers these kind of accidents, God forbid, if they happen. Also, we, as I spoke about parametric insurance, so we are covering any climate change problems which may occur. And the best thing about parametric insurance is that it does not involve long, protracted claim assessment. The triggers are predefined. Particular rainfall measurement exceeds, temperatures exceed, or wind speed exceeds, or humidity goes up and down. The trigger happens and automatic payment goes out from the insurance company. Right, we are out of time, but I'm sure your information regarding the different suite of products that you're offering, right from climate to cyber to environmental, is going to be helpful to a lot of MSMEs who are here. And as I mentioned, you're going to get more such questions coming your way later. Thank you so much for being a part of this discussion and for those insights. Thank you. Thank you. Since ma'am spoke about products, I would just like to say about we have a Bima Sati product,
specifically curated for MSME sector. We also have Mahila Udyam policy, curated for female entrepreneurs, because the government wants women to come into the formal workforce. So my company is doing its bit for MSMEs, and all my best wishes to all of you here, who not only for the endeavors in which you are involved, but also taking the company's economy forward. Thank you, Neha. Thank you. Thank you so much. Thank you, Neha. Thank you so much, and thank you so much, Smita ji. अब थोड़ा सा स्टेज को अपडेट करने का टाइम आ गया, so I would request my team to get on the job, and while they are doing this very important task, I'll do another very important task, which is thanking our sponsors. IDBI Bank as our banking and lending partner, the New India Assurance Company Limited as the general non-life insurance partner, Canon as our technology enabler, and CRC as the realty partner. The ET India SME Summits have been supported by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India. We have a lot of stalls outside the banquet, and I would request all of you that please, when you're heading out, you take 5 minutes out and you go through all of them. I'm sure that you will learn something or the other from these stalls as well about the products that they have all been talking about from their respective organizations. All of you can also ask your questions after the event is done. We will have all the speakers around. Please feel free to address all of your doubts in one go. I would also like to repeat that this particular event is being live streamed on our YouTube channel as well, The Economic Times. So if you want to tell any of your friends that you are on live, please make sure that you do. I have already messaged my parents, my cousins, everyone, and they have also told me multiple times to fix my tie. I have done that. I hope you all agree. I think I look better now from where I started. Thank you. And now, it's time for a panel discussion. I now extend a warm welcome to the panelists for our next session. A huge round of applause for all of our speakers as I welcome them on stage one by one. Mr. Jitendra Singh Rana, Chairman B2B of the Indian Industries Association, Greater Noida. Come on, everyone. We have great dinner for you, so please support us. Thank you. Mr. Nitin Kapoor, co-founder and CEO, IBA Crafts. Mr. Vikas Singh Chauhan, Director, Home Textiles Exporters Welfare Association. Mr. Girish Mudgal, co-founder at Time Tooth Technologies Private Limited. And Mr. Salil Kumar, Director, Marketing and Business Management, CRC Group. This conversation will be moderated by our very own Ashish Pandey. Which is coming on stage. Thank you so much, gentlemen. As you can see, we are making sure that all our panelists are relaxed. Ashish, you good to go? Yeah, thank you. You have 30 minutes. Thank you so much. Thanks, Dhruv. Before I start, though Dhruv gave the introduction, I still want to take the opportunity to introduce my guests. Sitting next to me is Jitendra Singh Rana, his chairman, P2B of the IIA, Greater Noida. Then we have Vikas Singh Chauhan, Director, HEWA. Then we have Mr. Salil Kumar, Director, CRC Group. We have Girish Mudgal with us next. He is co-founder, Time Tooth Technologies. And last, we have Nitin Kapoor. He is CEO, IBA Crafts. Well, ladies and gentlemen, we are midway into the session now. Like Dhruv mentioned,
you can ask our team for the link, YouTube link, because the session is going live on the YouTube. Well, without wasting any more time, I'll start with the panel. The topic that you can see behind me is Beyond the Shadows, why Noida is emerging as NCR's new hub for entrepreneurs. Well, gentlemen, yeah, first thing is we have something around 30 minutes with us. We'll try to, I'll ask you a couple of questions. We'll try to be in the limit of the time so that if not more, at least equal time is given to each of the speakers present here. Well, I'll start with you, Mr. Rana. Also, we will keep the discussion both in English and Hindi for the better understanding of everyone in the hall. Mr. Rana, I'll start with you, sir. When the Noida was conceptualized in 1976 by the government of the day, sir, I would like to, coming down the line, almost 50 years happened when it was first conceptualized in 1976. Officially, it was established. So I wanted to understand from you, sir, what have we achieved so far when we set out for the vision of Noida? Now, 50 years down the line, do you think what we conceptualized for the MSMEs particularly I'm talking about, because you're the veteran, you've seen this industry in Noida changing inside out. Have you achieved what we started out with? Well, Noida concept आया 76 में. एंड नोएडा को जो बसाया गया था इसलिए बसाया गया था कि इंडस्ट्रियल टाउन का कहीं कल्पना की गई थी और एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया बनना था और वो बना भी, पर इंडस्ट्री के साथ साथ उसमें रेजिडेंशियल भी आ गया, बाकी भी आ गया. आज सरकार का जो मेन थ्रस्ट है वो इंडस्ट्री पे कम, और अभी तक की जो सरकार गई है उनका इंडस्ट्री पे कम रेजिडेंशियल एरिया में ज़्यादा होता था. लेकिन फॉर्चुनेटली फ्रॉम लास्ट 10 years सिनेरियो फिर से चेंज हो गया है. इंडस्ट्रीज आर डूइंग वेरी गुड एंड वी हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस हियर. बहुत सारी जगह है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास. अगर हम कंपेयर करें एनसीआर में कुछ जगह है, जैसे हम गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव मोर और लेस एक कॉर्पोरेट बन चुका है, कॉर्पोरेट हब, आईटी हब और इस तरह का हो चुका है. दिल्ली जो इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था वो नाउ इट इज नो मोर इंडस्ट्रियल एरिया, इट इज ऑल कमर्शियलाइज्ड. Most of the places commercialized and they don't have any space for any type of industry. Noida means no idea. Noida is really no idea. यहाँ पे हर तरह की इंडस्ट्री है. आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किस तरह की इंडस्ट्री है. इतना डिफरेंट आइटम यहाँ बनता है, लोग कल्पना नहीं कर सकते. From needle to even आजकल वो बनने लगा है वो क्या होता है, ड्रोन भी यहाँ बनता है. We work for defense also. We make a lot of part for railways. We do automobile jobs. और इतना वर्सटाइल फील्ड है, इतना वर्सटाइल एरिया हो गया है ये. हम पूरे वर्ल्ड में अभी समय पूरा नाम पे नोएडा डिस्ट्रिक्ट गौतम नगर ने अपनी एक पहचान बना ली है पिछले 40 साल में. ठीक है, आपका जवाब मुझको मिल गया. विकास जी, आपके पास आऊंगा, आपने सवाल सुन लिया है. अब हालांकि राणा जी ने ओवरऑल एमएसएमईज की बात करी. आप क्योंकि नोएडा को अपैरल सिटी के नाम से जाना जाता है, टेक्सटाइल क्लस्टर्स और वेरियस अदर थिंग्स आप अच्छी तरह जानते हैं इस चीज को. सर, नोएडा का अगर हम टेक्सटाइल नेचर की बात की जाए, टेक्सटाइल हब की बात की जाए, तिरुपुर हो गया, पानीपत हो गया, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं. क्यों नोएडा, क्यों इतना क्या डिफरेंस है कि नोएडा, अगर हम नोएडा की बात करते हैं टेक्सटाइल्स में, तो ऐसा क्या डिफरेंट है नोएडा में जो बाकी सिटीज जो देश की हैं उससे उसको डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंट बनाता है? देखिए, अभी जो सर ने बताया बहुत अच्छा बताया कि नोएडा नो आइडिया वाली बात जो बताई वो सच बात ऐसी है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पहली बात तो सबसे बड़ी बात जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर. सेकंड थिंग इज दैट बहुत सारे इंटरनेशनल फेयर्स यहाँ पे होते हैं, तो बायर यहाँ पे डायरेक्टली आता है. सर फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो होता है दिल्ली में हो रहा है, जैसे इस तरीके से यहाँ पे होता है. गारमेंट फेयर होता है, इंटरनेशनल गारमेंट फेयर होता है, प्लस गिफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट फेयर होता है. तो आई हैव सीन इन रिसेंट ईयर्स दैट मेनी बायर्स स्टार्टेड कमिंग इन दीज फेयर्स. और आपको जान के हैरानी होगी कि 200 से 300 मिलियन डॉलर का बिजनेस केवल इंटरनेशनल गारमेंट फेयर ने यहाँ से किया. तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो नोएडा एक तो दिल्ली के करीब है, गुड़गांव के करीब है, प्लस पानीपत के करीब है, काफ़ी सारे हब्स के करीब है.
बट यहाँ पे क्या है, अगर आप कंपेयर करोगे स्ट्रक्चर का, लॉ एंड ऑर्डर का, जब से योगी जी हैं खास तौर पे, तो एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हुई है और पहले से भी अच्छा था। प्लस यहाँ पे जो क्लस्टर है बहुत इंटीग्रेटेड क्लस्टर है, लाइक नोएडा अपरल क्लस्टर जो है। फिर उसके अलावा अभी आपने देखा कि दादरी का जो वेस्टर्न कॉरिडोर है जो कनेक्ट किया हुआ है, तो दादरी जो बहुत ही मैं भी डिस्कस कर रहा था अपने लॉजिस्टिक फ्रेंड से, फ्रेट फॉरवर्डर फ्रेंड से, तो व्हाट ही वाज सेइंग कि नेक्स्ट डे समटाइम्स नेक्स्ट डे ही ट्रेन आपको मुंद्रा लगा देती है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर आप ट्रक से भेजोगे तो 3 से 4 दिन लगता है। लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें ये भी है कि जैसे आगे की अगर बात करें तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग अभी मिसिंग है कॉनकर में। तो अगर आप ये बात करें कि सप्लाई चेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो क्या ये बाकी जिन क्लस्टर्स की मैंने अभी मेंशन किया था, क्या उनसे बेहतर है? उनसे बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर आप बात करोगे पानीपत की, तो अगर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैलकुलेट करते हो, या आप तिरुपुर की बात करते हो, तो तिरुपुर तो बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन अभी नोएडा की खास बात ये है कि यहाँ पे आपके बाइंग हाउसेस भी हैं, यहाँ पे IDBI से कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट बहुत अच्छी है। अभी नाउ रिसेंटली हिंडन एयरपोर्ट इज आल्सो फुली फंक्शनल, तो इट इज कनेक्टेड ऑलरेडी टू ऑल द मेट्रोज। नाउ दिस जेवर एयरपोर्ट इज कमिंग। तो और यहाँ पे लैंड तो कुछ है ही नहीं, आप कहीं आप आगरा तक बढ़ते चले जाओ तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे वेंडर्स भी हैं, यहाँ पे सप्लायर्स भी हैं, एंड यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी आपकी सेव हो रही, बाइंग एजेंसीज भी हैं। बायर इज कमिंग डायरेक्टली टू IDBI एयरपोर्ट एंड इट्स रीचिंग टू द फैक्ट्रीज इन जस्ट 30-40 मिनट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक नोएडा को एक नोएडा एक पैकेज की तरह है। आपको MSME स्मॉल MSMEs भी मिल जाएंगे, आपको इंटीग्रेटेड यूनिट्स भी मिल जाएंगी, क्लस्टर भी यहीं पे है। तो ये अपने आप में एक वरदान है MSMEs के लिए। MSMEs के लिए वरदान है। हालांकि इस बीच में लैंड्स का भी एक इशू उठता है। हालांकि आखिरी बार I did a story for ET on Noida and I talked to both these gentlemen, even Girish I talked to. There was an issue of land, but I will come to that later in the second part. There is a reason behind that why I am touching the topic. I'll come to you, Mr. Salil. Sir, आपके पास में आऊँगा. Since you come from the real estate, you represent the real estate market. Sir, how do you see the patterns changing, or especially when we talk about micro markets like Noida, what's the scene of real estate, sir, here? देखिए, हमारे फेलो पैनलिस्ट ने बड़ी अच्छी बातें बताई। मैं थोड़ा सा डिफर करूँगा नो आइडिया पे। नोएडा के बारे में बहुत अच्छा आइडिया है शुरू से। कई बार क्या होती है कि सिंपलेस्ट थिंग इज द बेस्ट थिंग। तो अगर आप पूरे इंडिया की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होगी तो आइए बात करते हैं कि कहाँ पे 60 मीटर चौड़ी रोड से शुरुआत होती है जनाब, फिर ग्रीन बेल्ट मिलती है। Not 60 मीटर, 130 मीटर। हाँ सॉरी 60 हो गए, हम एक ही तरफ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर आपकी ग्रीन बेल्ट है, फिर सर्विस रोड है, फिर ग्रीन बेल्ट है, फिर सर्विस रोड है, फिर 100 एकड़ के प्यारे से गार्डन है, फिर आपकी हाउसिंग है या आपकी फैक्ट्रियाँ हैं। तो ये जो प्लस सीरीज ऑफ A+ ग्रेड स्कूल्स जो डिमांड है नए जमाने की, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें शायद स्टॉर्म वाटर लाइन की बात करें तो बेस्ट इन द कंट्री। अब इज द ओनली प्लेस जहाँ पे बारिश के समय आप अपनी वाइफ को बैठा के गाड़ी में चल सकते हैं। द ओनली प्लेस इन इंडिया। आप आराम से म्यूजिक चला लीजिए, अच्छा सा जो भी गाना पसंद हो आपको, आप आराम से घूमिए, कॉफी पिलाइए मैडम कॉफी। तो जनाब जब ऐसी चीज बनती है तो उसके बारे में तालियां होनी चाहिए। तो जो सब्सिक्वेंट चीजें हैं, जब आपने इतनी अच्छी चीज बना दी, और अगर आप बात करेंगे, अभी मैं रियल एस्टेट पे आ रहा हूँ 2 मिनट में, वी हैव ऑलमोस्ट इंडियाज बेस्ट लार्जेस्ट एयरपोर्ट, ऑलमोस्ट इन 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। कमाल की चीज है। एंड नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं तो ऑफ कोर्स मेरे वो कंप्यूटर ही होंगे, बट दैट इज द बेस्ट मॉल ऑफ द इंडिया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, एंड फुटबॉल इज एग्जिस्ट इन नोएडा इटसेल्फ। इस बात पे भी ताली हो जाए, रिटेल मार्केट। तो ये जो चीजें हैं नोएडा को शुरू से डिफरेंशिएट करती हैं। दो आई एम ए गुड केमिकल इंजीनियर, वर्क विद वर्ल्ड क्लास फर्म एक्सेट्रा, एंड डन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन गुड़गांव, बट जब मैंने इसका मास्टर प्लान देखा तो दिमाग हमारा घूमा और अपनी कर्म भूमि मैंने नोएडा में बना ली। और यहाँ पे जिस तरह का आपको इकोसिस्टम मिल रहा है, तो पहले क्या एक होता था, पीपल वर लुकिंग फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन ए शॉर्ट टर्म, बट अभी रिटर्न ऑन इन्वेस्ट ऑन ए लॉन्ग टर्म कपल्ड विद रिटर्न ऑन प्राइड, उस बात में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं।
तो उसकी जब स्काई लाइन की बात करेंगे, रिटर्न ऑन प्राइड की, तो नोएडा नंबर 1 आ रहा है इसलिए। और जैसा मैंने पहले कई बार स्टेटमेंट दिए हैं कि इंडिया इज गोइंग टू बी द ऑफिस कैपिटल ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, क्योंकि हमारा जीसीसी डिफरेंट फॉर्मेट में इतने सारे ऑफिस सेक्शन इंक्लूडिंग फाइनेंस के, सर हमारे जो IDBI के सर बता रहे थे, अगर आप सिंगापुर में देखें तो फाइनेंस के टावर 20-20 लाख फुट के लाइन से बने हुए, वो सब नोएडा में आना। तो इतनी सारी डिमांड फोरकास्टेड है। एंड जैसा सर ने बताया कि इंडस्ट्रियल टाउन बनाया था, बट इंडस्ट्रियल टाउन के साथ कंप्लीट इकोसिस्टम होता है तो ग्रोथ होती है। We have residential coupled with commercial. Commercial have a subdivision of office, retail, and various other GCC park, data center, and semiconductor industries, what not. Everything is coming on a structured way here. So Noida is going to lead by leaps and bounds, definitely. So what I'm talking about, soon you will see the prices of, in times to come, 7, 8, 9, 10 years, you will see an apartment housing 1 lakh per square feet here, office is more than $400, $500 per square feet here, and along with the best of retail spaces. So those are the skyline which are evolving in Noida. Those are. Any other question? I'll just come back to you about the land that I wanted to discuss again in the second round. I want to come to you, Girish. You heard what the gentleman discussed here about the MSMEs and the overall ecosystem, how Noida is so different from other parts of the country. Since you come from something very different, generally what we see in Noida is about the manufacturing, textiles, everything related to that. You come from the advanced manufacturing, if I can say like that, it's advanced manufacturing. You develop the mission critical systems in defense, aerospace, and medical engineering, if I'm right. I want to come to you, why I'm coming to you with this particular question is because, like the theme says, it's about entrepreneurs. And we very well know that this kind of sector, engineering, advanced engineering, doesn't exist. It's in the nascent stage in Noida. So first of all, what prompted you to come into this particular sector? And second thing, what's your advice to the newbies who's coming into the field, especially in aerospace? How do they go about it? Yeah. Hello. Yeah. Thank you so much, Ashish, and of course, thank you to the to ET to organize this. And there is a very wide range of industries coming here, and when we, as a company, Time Tooth, we work in the aerospace, defense, and medical sectors, developing mission-critical systems. So one of the things that we found, and we realize even now, is that there is a lot of potential in Noida to even start establishing a stronger presence, or even not only a presence, but actually lead India's next generation of technology development from here in Noida. We primarily know technology centers for defense and aerospace being, Bangalore, Hyderabad, Pune, and other places in India. And Noida definitely has that potential. One example that I can share is, for example, all of us fly in aircraft from one place to another, regional as well as across cities. Are we aware that, every seat, every chair that we fly on any aircraft, be it civil or military, 100% of those seats are imported in the country. Why is it so? The reason is that we have so many automotive seat manufacturing companies, bus seats, railway seats, but why not aircraft seats? So one of the things that Noida has achieved. So Time Tooth, as a Noida-based company, has become the first and only company in the country to have aircraft seats designed, developed, and manufactured from here. So, iske liye ek taaliyan ho jaye. So, the point I am trying to arrive at is what does it take to do that, and that is what Noida can do better, if I may say so, is the fact that it needs an innovation mindset. When we are trying to bring in manufacturing industries to Noida, of course the manufacturing base grows, but if you start questioning, okay, who owns the design IP of these products that we are manufacturing, right? A lot of these design IPs are owned by foreign MNCs,
while we are manufacturing those products here, right? So the mindset that we need to create, and that is what we are trying to do, based here in Noida, is actually to create the design, to own the IP, to build the technology, to get the regulations cleared. You know, one of the things that it takes to develop such technologies, for like Sir said, there is a lot of new drone companies that have come up here. One of the biggest barriers for these technologies to grow is regulations. You need to meet aerospace regulations, defense regulations, to meet certain standards of qualification tests that the products have to pass. Now that is the mindset that we need to create here to make Noida an even more stronger technology base. Like many of the panelists said, we have a lot of the infrastructure here, we have schools here, we have of course access to Delhi and the power corridors as well, but one of the things that we need to bring in more is to have this innovation mindset where we have ambitions to develop, create, develop, manufacture and supply some of the best aerospace and defense products from Noida. Fine, fair enough. Now I'll come to Nitin. First of all, sorry for making you wait so long, but it happens when you are sitting last in the chronological order. But now I have arrived finally, so it's first from this side, but what the order I maintained was quite opposite too. Okay, anyways, Vikas aapko jana chahiye is also, if you're not aware, is also from the textiles field, but there is a difference because it comes with a blend of technology. JIT. I'll come to you about the role of JIT, just-in-time technology, manufacturing play that you do. Why don't you explain to the audience what it exactly is? And for me, I have heard it happening in China and advanced economies. What are you doing exactly in Noida with JIT in textiles? So thank you, Ashish. So I'll tell you what we do where we are at the moment. So we are a fashion technology company, and we're working on this unique technology called just-in-time garments manufacturing, which is also a copyrighted process today. Now what happens is, innovation in manufacturing is very rare, the way he mentioned is, and there is a reason why it is very rare, because manufacturing it's a dirty job, it's a blue-collar job, mostly लोग नहीं करना चाहते उसके अंदर. But I'll tell you, when we started out, we were in a traditional model. We used to buy products, put it online, बिकता था, उसके बाद we used to ship it from our warehouses. What happens in fast fashion is that whatever is sold to the customers, the rest goes back into your warehouse. And you'll always have broken sizes and colors lying into your warehouse, sort of not selling. So, and the customer is looking for a new design every time to showcase something new to them. So that is what is making them to come back to you again and again. So we realized that ultimately, जितना भी हमने product बनाया, बेचा, जो बच गया वो warehouse में जा रहा है, profit कुछ बच नहीं रहा है, and there is always a vicious cycle कि जो बचा हुआ सामान है उसको हम बेचें, दोबारा से नई इन्वेंट्री लेकर आए, नया कुछ सिखाएं कस्टमर को, और वो vicious cycle कभी खत्म ही नहीं होता है. So we came up with a model, and this analogy was drawn from automobile industry, because automobile in 1977 Toyota faced the same problem. उनके साथ क्या problem था? They used to manufacture cars, and whatever was not sold, they used to put a markdown on it, and then used to sell it to the customers. कि अपनी inventory खत्म करते थे वो लोग. And at the end of it, the next lot came in. They realized that the people are not buying new cars. They wanted to wait for them to put a markdown on the inventory and then start buying it. So this is something which is not working out. And they came up with a JIT model back in 1977, and the rest of the automobile players followed it out. So I think we took the analogy from there. We were able to complete the order within 48 hours, within 2 days, from scratch to dispatch and send it to the customer. So when the order comes in, we start from white grey fabric, we color it, print it, embroider it into the meterage that's required for that particular garment. अगर 2 मीटर fabric चाहिए तो हम 2 मीटर ही create करते हैं. And we were able to bring cost parity as compared to any other traditional manufacturer in the country because of the automation that we have brought into the system at every stage of garments manufacturing. So चाहे वो printing हो, stitching हो, cutting हो, हर stage पे there is an automation which is brought into the picture, and with that automation
हम कॉस्ट पैरिटी ला पाए हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी ला पाए हैं, so that we are able to compete with the other players into the market plus with the international competition which is there. So on the front end we bought in an AR/VR technology जिससे हम बहुत सारे designs customers को दिखाते हैं without having the inventory being produced. So from a produce to hopeful model कि ये बिक जाएगा, to produce after it sells model is something which we transited to, and that is what just-in-time stands for. To produce something within the TAT with the customer is expecting, but not have that inventory with you until unless it is sold. And just to give you a data, we saved 10.2 million liters of water by not producing garments in anticipation last year. Second data says 35 to 40% of the garments which are produced locally वो एक बार भी नहीं बिकते. They're not even sold once. So they're either being dumped or they're either being burnt out of the system. और वो सारी resources जो उसको बनाने में गई हैं वो सब waste जाता है. That's an interesting set of data that you share. I guess we are running out of time, but still we have time for one answer. I want to also open it to the audience. I'll try to manage it somehow. जितेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ. सवाल जो हम last time रुके थे, दो चीज़ों की बात करना चाहता था सर. MSMEs की land availability और दूसरा है MSMEs के जो rules and regulations हैं, चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो. मैं इसलिए भी बात कर रहा हूँ सर, कल परसों ईटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें नीति आयोग के मेंबर राजीव बाबा फॉर्मर होम सेक्रेटरी भी थे. उनकी कमेटी ने कहा था कि बहुत सारे 360 डिग्री कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे MSMEs को हेल्प करने के लिए. उन्होंने कहा है कि उनकी रिपोर्ट ने कहा कि कम से कम 1400 रेगुलेशंस पूरे साल में एक छोटी सी MSME को फेस करना पड़ता है. और डेली के हिसाब से अगर आप बात करें ऑन डेली बेसिस इट्स समथिंग अराउंड 40. दैट्स अ बिग नंबर. सेकंड थिंग है कि इसको आप एक्सेप्ट करते हैं. एब्सोल्युटली. सेकंड थिंग है लैंड की बात करते हैं, सर लैंड अवेलेबिलिटी की. लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट फॉर द स्टोरी सर यू गिव सम डेटा एंड हाउ डिफिकल्ट इन नोएडा, पर्टिकुलरली नोएडा वी आर टॉकिंग अबाउट कि लैंड ऑक्शन करना, लैंड का रेट यू वर टेलिंग समथिंग अराउंड 1 lakh square feet, something around that. 1 lakh per square meter. Per square feet, or greater Noida slightly less. It is something like but this. still on the similar lines. तो लैंड का आपकी अवेलेबिलिटी MSMEs को और छोटी MSMEs को आपने बताया था शायद 8000 स्क्वायर फीट के हिसाब से कुछ चाहिए, उतनी अवेलेबल नहीं है. नाउ यू प्लीज एक्सप्लेन. फॉर्चुनेटली डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर में बहुत सारी जगह है और बहुत अच्छा स्कोप है. वी हैव द बिगेस्ट लैंड बैंक, बट यहाँ सिस्टम कुछ अजीब सा हो गया है. SMEs को सब प्रमोट करते हैं, लेकिन अगर लैंड लेने जाएं किसी भी अथॉरिटी से बोले तो वो बोलते हैं सीधा ई ऑक्शन में जाएं. ई ऑक्शन में जो इन्वेस्टर है, क्योंकि बड़ा लिबरेटिव सा फील्ड है जहाँ 300 रुपये मीटर से जगह स्टार्ट हुई थी और 1 लाख रुपये मीटर पहुँच गई है. मैंने खुद 300 रुपये पर स्क्वायर मीटर में साइड डी सूरजपुर में इंडस्ट्रियल प्लॉट लिया था. इट वॉज इन 94-95, नाउ इट इज मोर देन 1 लाख रुपीज. तो हर आदमी ये सोचता है कि मैं यहाँ पैसा लगा दूँ. इन्वेस्टर यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी इन्वेस्ट होता है और वो रियल इंडस्ट्री नहीं चलाते. मैं पिछले 5 साल से ई ऑक्शन आया है जब से, तब से मैंने हर प्लेटफॉर्म पे इस पॉइंट को उठाया है. मैंने चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो या गडकरी साहब से मिले हैं. हम एक बार योगी जी से भी 2-3 बार बात कर चुके हैं, लेकिन वो ई ऑक्शन वाला प्रॉब्लम नहीं खत्म हो रहा है. अब वो वेणुगोपाल साहब चले गए, वरना मैं उनसे रिक्वेस्ट करता है कि ई ऑक्शन वाला एक बार जरा ऊपर तक पहुंचाएं. सर आज अगर आपको 8000 प्लस की 8000 स्क्वायर मीटर या उससे ज़्यादा जमीन चाहिए, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी आपको बुला के आपको जमीन देती है. लेकिन जब हम बात करते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज की, स्मॉल इंडस्ट्रीज को चाहिए 500 मीटर, 800 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 4000 मीटर. उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है. उनको बोलते हैं जाइए आप ई ऑक्शन में जाइए. ई ऑक्शन में जो रिजर्व प्राइस है 15000 का, ऑक्शन में जाता है 70000 75,000 रुपये. अगर वो सारा पैसा, अपना सारा पैसा सिर्फ लैंड पे लगा देगा तो काम कैसे करेगा? वैसे भी स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोग मतलब सबके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं. इवन हमारे सामने बैंकर बैठे हुए हैं, उनके पास भी बहुत सारी स्कीम है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सबसे बड़ी दुख की बात है, जब एक बच्चा पैदा होता है और चलना शुरू करता है, जब वो लड़ रहा होता है तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करता. कोई बैंक,
कोई इंस्टीट्यूट, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सामने नहीं आती। उसको हैंड होल्डिंग तब चाहिए होती है, न कि तब जब वो चलना शुरू कर दे। जब चलना शुरू कर लेगा तो खुद ही मैनेज कर लेगा। सबसे बड़ा इशू स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए आता है, और इसीलिए इसके डाटाज नहीं है, लेकिन मोर देन 60% इंडस्ट्री स्टार्ट होती है और 6 महीने, साल, 2 साल के अंदर बंद हो जाती है, जो कहीं रिकॉर्ड में नहीं आती। वो किसी तरह के रिकॉर्ड में इसलिए नहीं आती क्योंकि उसने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होता। हमारे पास लगभग 40 से 45 रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं, हमारा सारा टाइम और एनर्जी उसी में लग जाता है। हमारे यहाँ पहले, हमारे वैसे कहने को सिंगल विंडो सिस्टम है, और सिंगल विंडो सिस्टम काम नहीं करता सर। सिंगल विंडो सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता। यहाँ पे सिंगल विंडो सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। सरकार का है, सिस्टम है, लेकिन सब जानते हो वो क्यों काम नहीं करता। मुझे यहाँ पे कमेंट करने में शायद वो ठीक नहीं लगेगा, बट वो काम नहीं करता, उसका रीजन सभी को पता है। ई ऑक्शन दी वर्स्ट चीज है स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। इट्स समथिंग लाइक अ पॉइजन। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे सारी जो लैंड है वो आपको लीज होल्ड पे मिलती है। लीज होल्ड का मतलब क्या है? आम आदमी समझता है कि सिर्फ आपको एक लीज रेंट देना है और आपका काम खत्म हो गया। When you get into the industry, तो आपको पता चलेगा लीज रेंट क्या होता है। लीज रेंट आप देते हैं 11 टाइम्स देते हैं, तो 1 टाइम लीज रेंट में खत्म हो जाता है लीज रेंट। लेकिन इसके बाद भी आप अपने कोई भी चेंज कर रहे हैं, सपोज आपने अपना कोई प्रोडक्ट चेंज किया, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी। आपने अपना बैंक चेंज किया, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम अथॉरिटी। कोई भी आप उसमें चेंज करते हैं, कोई आपने स्पेस क्रिएट किया, उसके लिए आपको परमिशन चाहिए। अरे भाई क्यों चाहिए परमिशन, और किस लिए चाहिए? और आप सभी जानते हैं परमिशन लेने में कितना टाइम लगता है। तो ये 2-3 चीज हैं जो हमारे यहाँ पे मेन हर्डल बनी हुई हैं। फेयर इनफ सर। विकास जी, कमिंग टू यू, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, अब इस टाइम पे ट्रम्प टैरिफ्स की ट्रम्प टैरिफ्स की बात कर रहे हैं सर, डाइवर्सिफिकेशन की भी बात करते हैं, और बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि हमें अपना जो एक्सपोर्ट्स हैं डाइवर्सिफाई करने हैं। सबसे पहला सवाल ये रहेगा सर कि डाइवर्सिफिकेशन जो टेक्सटाइल्स में है, खासकर नोएडा के रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, वो हो रहा है? अगर हो रहा है तो हम डाइवर्सिफिकेशन के किस लेवल पे हैं, क्या चीज़ें कैसी ग्राउंड पे चल रही हैं? दूसरा है, कुछ ऐसी स्कीम्स है जैसे PLI की टेक्निकल टेक्सटाइल्स की बात की जाए सर, उसके बाद में कुछ बताएंगे किसी तरह से हेल्प की हो रही है डाइवर्सिफिकेशन में, या क्या हो रहा है ग्राउंड में, अगर आप बता सकें फटाफट। देखिए, जो ट्रम्प टैरिफ है उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, ख़ास तौर पे सभी को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, MSMEs हो या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हो जैसे ट्राइडेंट या वेल्सपन। क्योंकि US जो बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, खासतौर पे एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स की अगर बात करें तो 28 to 30% एक्सपोर्ट US को जाता है। तो एक हाथी है पूरे दुनिया में जिसको हम लोग US बोलते हैं मार्केट के हिसाब से। और अगर आप दूसरी जगह देखो तो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली। जैसे अभी सीपा एग्रीमेंट विद UAE हुआ, फिर अभी सीटा एग्रीमेंट विद UK हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट हुआ, अभी स्विट्ज़रलैंड के साथ में 3-4 कंट्रीज़ के साथ में एग्रीमेंट हुआ, प्लस यूरोपियन यूनियन के साथ में भी एग्रीमेंट की बात चल रही है। और दूसरा समझने की बात यह है कि जैसे जापान जैसे कंट्री जिनका $37 बिलियन का टोटल इम्पोर्ट है गारमेंट का, तो आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया का परसेंटेज केवल 1% है। दूसरा जो होप और उम्मीद जगी है वो जगी है कि अभी UAE के साथ जो हुआ है, तो हम लोग का जो बिज़नेस है डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो जस्ट इट्स डबल नाउ इन 3 years। और UK की जो बात करें तो UK का जो परसेंटेज है इंडिया का विद UK, तो हम लोग यहाँ 5% अपना टोटल एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स का है वो हम UK करते हैं। तो गवर्नमेंट इज़ वेरी होपफुल कि आफ्टर FTA वी आर एबल टू डबल दिस नंबर्स इन फ्यू ईयर्स। तो और अब आपकी बात आती है कि टेक्निकल टेक्सटाइल की अगर बात करते हैं तो टेक्निकल टेक्सटाइल में जो हम लोग आते हैं तो उसमें अभी गवर्नमेंट ने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन बनाया था 2020 में टू प्रमोट 12 सब सेक्टर्स इन द टेक्निकल टेक्सटाइल्स। उसका बजट 1480 CR के आसपास था। तो उसमें अभी गवर्नमेंट उसके अलावा रोटेप स्कीम दे रही है ऑन एक्सपोर्ट्स। उसमें क्या होता है कि जो ड्यूटीज़ लगती है मैन्युफैक्चरिंग में वो सब वापस करती है गवर्नमेंट। और दूसरा जो स्कीम है वो PLI स्कीम है, उसमें भी आपको ऑन मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट काफ़ी सारे रिबेट देती है। प्लस जो अगर आप गारमेंट की बात करें, ट्रम्प टैरिफ की बात करें, तो अभी हम लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट भी गवर्नमेंट से की थी कि फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, कि अभी WTO आपको सबको पता है कि अभी WTO ICU में है,
भाई कोई पूछ नहीं रहा 50% किसी ने लगा दिया, उसको कोई कहने वाला नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट के पास अच्छा टाइम है अपनी इंडस्ट्री को हैंड होल्डिंग करने का। अभी अगर 8 to 10% का स्क्रिप्ट जैसे पहले एमईआई स्कीम आती थी या कोई भी स्कीम इस तरीके से लाते हैं, अदर देन अभी एग्जिस्टिंग स्कीम रोस्टर या रोटेबल स्कीम जो है, तो अभी छोटे एमएसएमईज को जो छोटे एमएसएमई सेक्टर है उसको भी हैंड होल्डिंग की थोड़ी ज़रूरत है, लाइक 3 to 6 months। तो अगर गवर्नमेंट उसमें कुछ दिशा में काम करती है कि कुछ भी अगर मान लो इंटरसिकुलाइजेशन स्कीम ले आती है या स्क्रिप्ट को दे देती है, तो अगर हम लोगों को क्वेश्चन मिलता है 8 to 10% का, तो आई थिंक वी कैन ईजिली सर्वाइव। क्योंकि 50% होने के बावजूद भी हम लोगों का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो इतना डाइवर्सिफाइड है, उसने इतना रेजिलियंस शो किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि आज हम रिसाइकिल्ड कॉटन से हम टॉवल बना रहे हैं, बेडशीट बना रहे हैं, विच इज़ 30 to 40% चीपर देन चाइनीज वट एवर दे आर प्रोड्यूसिंग। तो अभी क्या है कि हम लोगों को 25% में तो हम लोगों ने एब्जॉर्व कर लिया था, लेकिन जब एडिशनल 25% लगा तो हम लोग नहीं कर पाए। तो अभी कोई कुछ भी बोले, लेकिन अभी दिक्कत चल रही है मार्केट में, अभी लोगों के ऑर्डर नहीं जा पा रहे हैं। बट वी आर वेरी होपफुल कि अभी सुनने में आया था कि शायद वो लोग ट्रेड डील्स हो जाए कुछ, तो उससे कुछ होगा। लेकिन जो सीजन था क्रिसमस का वो चला गया, और वो चला गया उससे 2 से 3 साल कम से कम लगेंगे एमएसएमई सेक्टर को उभरने में, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है, छोटी चीज़ नहीं हुई। 6 months है, अगस्त पे दूसरा झटका लगा एडिशनल 25% का, अप्रैल में पहला झटका लगा था। उससे इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 10 से 25% तक रेवेन्यू लॉस होगा। अभी आपको इस वाले क्वार्टर में आपको दिख जाएगा। ठीक है सलील जी, सर आपके पास आऊँगा। लास्ट क्वेश्चन में जब हम बात कर रहे थे सर रियल एस्टेट सेक्टर की, आप बता रहे थे कैसे नोएडा की मार्केट कैसे लीड कर रही है रियल एस्टेट में खास तौर पर। दूसरी चीज़ मैं उस टाइम नहीं पूछ पाया था, मैं पूछ रहा हूँ सर कि जैसे जैसे एमएसएमईज आ रही हैं, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, लार्ज स्केल जीसीज आ रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उसके साथ साथ लोग भी आ रहे हैं सर। तो जो इन्फ्लक्स है उसके साथ साथ कमर्शियल के साथ साथ रेजिडेंशियल स्पेस भी चाहिए, उसके ऊपर सर कुछ बताएंगे किस तरह से नोएडा अपने आप को तैयार कर रहा है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है शायद उस तरह से, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। जी इंटरेस्टिंगली जैसे हमारे फेलो लोग बोल रहे थे, तो एक तो मेरा भी ये मानना है कि देखिए बिजनेस साइकिल में शॉक आपको लगेंगे, ये लॉ है नेचर का, वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड। नंबर 2 जो बात अप्रूवल प्रोसेस की हो रही थी, मेरा ये मानना है गवर्नमेंट का जो काम है वो पॉलिसी बनाना है। एग्जीक्यूशन के लिए आपको आउटसोर्सिंग एजेंसीज इंटरनेशनल नेशनल लेवल की चाहिए। जैसे पासपोर्ट में देख लीजिए आप, तीसरे दिन पासपोर्ट घर पे आ जाता है। सेम चीज़ था जहाँ पे पहले एक नाइटमेयर था, वो आज एक प्लेजर है। 10 मिनट में आप वहाँ काम कीजिए, तीसरे दिन आपके पासपोर्ट आ जाता है। तो एग्जीक्यूशन से निकलना चाहिए गवर्नमेंट बॉडीज को, वो आउटसोर्स मॉडल में शिफ्ट हो तो आपके जल्दी नतीजे आएंगे। और जहाँ तक नोएडा की बात है, इंटरेस्टिंगली नोएडा इज द ओनली प्लेस जहाँ पे 3 कैटेगरीज इवॉल्व हो रही हैं, रेजिडेंशियल कमर्शियल सभी जगह, A+ और A++। यहाँ पे B और B+ की गुंजाइश नहीं दिख रही है। राइट फ्रॉम एक्सटेंशन टू द यमुना एक्सप्रेसवे जो भी कैटेगरी इवॉल्व हो रही है वो A+ और A++ के प्रोडक्ट्स रेजिडेंशियल कमर्शियल या IT SEZ सभी हाई क्वालिटी में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जनरेशन Z और मिलेनियम के मिक्सचर हैं सभी अच्छे, एक्सपेंडिचर पावर अच्छी है और टैलेंट पूल भी अच्छा है। तो हम लोगों को बड़ा केयरफुली क्राफ्ट करना पड़ रहा है कि यहाँ पे जो B क्लास का मार्केट था, B मतलब थोड़ा सा लो प्राइस मान लें, वो सेगमेंट की गुंजाइश नहीं है, बजट की बात है। तो आपको हाई प्राइस चाहे इंडस्ट्रियल लैंड हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे कॉमर्शियल हो, उसके लिए मेंटली तैयार होना पड़ेगा। बिकॉज नोएडा जैसे बहुत अच्छे न्यूज़पेपर ने भी दिया था कि नॉर्मल सेगमेंट के लिए अफोर्डेबल नहीं रह गया है, तो यहाँ पे इस सब के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब आप स्काई रॉकेटिंग बिजनेस की तरफ जाते हैं तो ये चीज़ें होती ही हैं। बट नॉनदलेस जैसे यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंगली देख ले, पिछले 1 साल में एक जितने भी लॉन्चेस एक A+ कैटेगरी के हुए हैं रेजिडेंशियल में, वो सब 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से नीचे कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। एंड दे आर रेंजिंग फ्रॉम 10,000 पर रुपीज स्क्वायर फीट टू रिसेंटली लॉन्च बाय समवन 34,000-35,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। So that's the range is available now in residential. Similarly ऑफिस स्पेस की बात करूँ तो जो कभी 3-4-5,000 रुपए के फुट आती थी, तो नेक्स्ट ईयर और कपल ऑफ 2 more ईयर जो रेंटल आपको मिल रहे हैं, तो द करस्पॉन्डिंग कैपिटल प्राइस
would be somewhere around 18,000 से 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट आ रहा है. तो ये चीजें विजिबल हो रही हैं. तो लेट्स गेट प्रिपेयर्ड फॉर दिस बिकॉज हाई क्वालिटी मार्केट यहाँ पे डिमांड ही आपकी हाई क्वालिटी की आ रही है, क्योंकि सबकी इनकम डिस्पोजेबल इनकम अच्छी है, तो कोरस्पॉन्डिंग मार्केट भी उसी तरीके के इवॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे. कभी नोएडा को सर अफोर्डेबल मार्केट की तरह देखा जाता था, मतलब अफोर्डेबल कजिन ऑफ गुड़गांव या दिल्ली की बात की जाए, लेकिन जिस तरह का डेटा बता रहे हैं और जिस तरह की बात बता रहे हैं, तो मतलब वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट आल्सो. जी, मैं आपकी बात जैसे अगर बोलूँ तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये अफोर्डेबल क्या चीज़ है नोएडा के लिए. जो फैक्ट है, बिकॉज ये जो मार्केट जिस तरह से इवॉल्व हो गया है, बिकॉज मैंने जैसे बोला कि आज करीब आपके पास 7 से 8 लाख कंपैरेटिवली जैसे ITS के लोग ही काम कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट 3 to 4 ईयर इस नंबर आपको डबल से ज़्यादा दिख रहे हैं, और उसके अगले 5 साल बाद इट में भी टेट्रा पेंटा टाइम्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, और वो भी अच्छी डिस्पोजेबल इनकम के साथ. तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, तो रादर हमें उसके लिए ताली बजानी चाहिए सर. अच्छा मार्केट है, इवॉल्विंग मार्केट है, बेस्ट मार्केट है. लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर सच ए गुड मार्केट. जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, तो दे आर गेटिंग फैंटास्टिक रिटर्न, एंड इवन नाउ देयर इज ए बिग डेल्टा अहेड. लेट्स द वे इंडिया इज ग्रोइंग, हम बात कर रहे हैं सर 25 से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी की नेक्स्ट 20 ईयर्स. तो नोएडा कहाँ पहुँचेगा, तो वो तो एक पॉसिबल है ही. आप किसी भी सुपर डेवलप्ड, बिकॉज हम विकसित भारत तो बोलने लगे अपने आप को, रीचिंग टू विकसित भारत. तो विकसित भारत में, डेवलप्ड कंट्री में, जो डेवलप्ड कंट्री के रेट तो पे करने ही पड़ेंगे हम लोगों को. इट्स नेचुरल है. थैंक यू. ठीक, गुड इज रेट फॉर रियल एस्टेट सेक्टर एटलीस्ट. ओके गिरीश, कमिंग टू यू. You heard what the gentleman said. Since we are already up with time, but still, if you can come fast, how do you see Noida down the line, 5 years down the line, especially for your sector when I talk about aerospace and medical engineering? Quickly, if you can. Yeah, sure. I'll try to be faster. So, let me just quickly summarize maybe for all the different stakeholders here, right? One is the industry itself. We see that it's very critical that Noida and Noida's manufacturing companies really up the game in terms of the quality processes. The rigorous quality processes that are expected in these high technology sectors, like there is aerospace and defense AS9100 quality management system. So these kind of companies are there in other evolved technology sectors, and this is what Noida needs to do as an industry. Now also, while we talk, industries do this, industries do innovation, but then we also need support, of course, from the policymakers. There are very exemplary defense and aerospace industrial corridors in other places in India as well and other countries. Like there is a good example of the Tamil Nadu industrial corridor. So it's a very evolved corridor where the entire ecosystem of the buyers, which are the large aerospace and defense OEMs, that they buy, the suppliers, the quality management systems are deployed and infrastructure is deployed. So it's good to see that the industrial corridor, defense industrial corridor between Kanpur and Noida is progressing, but still it will need to be maybe ramped up faster if this sector has to grow. The third side is, of course, the banking sector. The banking sector, as we all have heard from multiple sources, it needs to support more proactively, particularly industries that are coming up. And like sir ने बड़ी अच्छी तरह से बताया कि मैं sports के तौर पे बोल सकता हूँ कि when sportsmen are coming up, that's when they need the sponsorship and support. एक बार वो Olympic medal जीत गया या Commonwealth medal जीत गया तो sponsorship तो आनी ही आनी है. But what we need from the financial system is particularly support for MSMEs as they build these quality systems, dive into innovation and create these regulation products. So I think with that I'll summarize. Thank you. Nitin, again, the last question of the session, but you will be showstopper now. So any 3 challenges you see overall, if we talk about the overall environment of the industrial environment in Noida, any 3 challenges you see कि सरकार ये 3 काम थोड़ा भी ठीक कर दे तो चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं. So Ashish, that's a long list, but I'll try and keep it real. 3 things. One, infrastructure is there, but ecosystem is not there.
when we really talk about the whole manufacturing in respect to, at least, and I'm talking about textiles, I can say that things are really scattered in that way, and you're running around coordinating a lot of things when it comes to, be it, printing, dyeing, logistics, and you're putting them all together, you're wasting a lot of time there. Number two, skilled labor. So time like these, all the skilled laborers go back to their homes and you lose 30% of the business. You're not able to cater to that particular business. You're not able to respond to the demand that's there. And third is obviously the credit availability is always an issue for a company. It's not, so when you really talk about manufacturing, it's not cooler. It's not cool as a business. So as a startup, nobody wants to come into a manufacturing business. In fact, people who are running manufacturing businesses, their children do not want to join the second part of the business. I mean, they want to study into good universities, go back to work for Amazons or probably Walmarts of the world, but they do not want to join the business. In fact, they themselves tell them that, you shouldn't be joining the business. I've worked my life hard towards help it. others make their business. So that is something which is very real on the ground, and with some belief and support and mentorship from the industry, I believe there is a lot of potential in the manufacturing system, because as they said that, अगर manufacturing बढ़ेगी तभी ही wealth generate होगी, उसके बिना तो नहीं हो सकती है. And look at China for that matter. I'm sure we are developing a lot of things, he's developing a lot of things, लेकिन आज भी होली दिवाली पे बाहर चाइना वाले products ही हम ultimately buy कर रहे हैं वहाँ पे. राखी तक वहाँ से आ रही है. And we just do not have the infrastructure to manufacture those products. ये problem है. Problem hai. Of course, there are challenges like in other cities of the country. Noida too has challenges despite being closer to Delhi. You heard what the gentleman said. It was an insightful discussion. Thank you very much. Thank you so much to all of our panelists for their insights. I would request my team to clear out the stage, because now we are talking tech. Well, as you all know, MSMEs या किसी भी प्रकार के business में technology का एक बहुत ज़्यादा बड़ा role है. In 21st century, when you are doing a business, it's very crucial that you are supported with the right software. AI की बहुत बात होती है, but hardware is also very, very necessary. एंड उसी सिलसिले में हमारे जो अगले स्पॉन्सर हैं वो है कैनन. उनका एक बहुत इंसाइटफुल सेशन है जिसके बारे में अभी वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे. आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट हार्डवेयर इज़ वेरी नेसेसरी व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड बिजनेसेस, बिकॉज दे सपोर्ट योर ड्रीम्स, एंड दैट्स वेयर द नेक्स्ट सेशन कम्स हैंडी. सो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू put on your insightful hats and you're ready to learn. Canon has been empowering SMEs with its holistic office automation solutions. From document management systems to the new Maxify series of affordable printers, Canon is helping out both big and small for boosting productivity and efficiency in today's fast-paced world. And to talk about how each one of you present in this room can use the whole offering suite, I'd like to invite Mr. Nahid Akhtar, Deputy Sales Manager, Canon India, to give us an insight into his whole range. Please welcome on stage Mr. Nahid Akhtar. And I can see थोड़ी सी energy low है, guys. Come on. Thank you. Can we start? Please. Yeah. So, hello and welcome everybody.
A warm good evening to all of you, and thank you for being here. Myself, I am Nahir Akhtar, and I am taking care of Canon A3 business for UP West. So today I will be presenting you the journey of Canon, how Canon emerged, how we came into India, what kind of products we have, what kind of offerings we have. So starting with that, I would like to take you with the journey of Canon, how Canon has emerged. So this is how Canon started. We started in 1933 with a small innovation with camera printing and all. And Canon Inc., as a Canon Inc., Canon came into the exist in 1977 when we started our office in Ohio, Japan. If I talk about Canon journey in India, we came in 1997. So I just want to take you. In 1997, Canon came into India, and Canon India is a pure subsidiary of Canon Singapore. Canon Singapore, we report to Canon Singapore reports to Canon Inc. in Japan. So this is how, in India, we are somewhere around 20, we are going to complete somewhere around 28 years in India with 1,000 plus employees. And the best part is that since last 9 years, this is the best thing what we have. Since last 9 years, Canon is #1 if I talk about A3 printing business. So we are handling #1 market share since last 9 years. We have at least somewhere around 3,000 plus locations where we are present directly or indirectly through our 180 plus partners. So these are all the certifications what Canon carry. So it's not all about the product, it's about the developing community, taking care of the environment, taking care of the business, taking care of the social responsibility. So if I talk about ISO, from ISO 9001 to ISO 26000, we have all the available certificates which are required for any of the reputed or any of the great brands. As I told you earlier, I won't take too much of time. So as I told you, from 2016 to 2024, it's a great achievement that in a row, 9 years, Canon is handling a flag of #1 in A3 business, handling a market share of 32 to 34%. This is how our reach across India. As a Canon, we people are divided in 4 parts, north, east, west, south, all across we have our direct presence. And apart from this direct presence, we touch base near about 20,000 pin codes. So this is the strength behind Canon being #1. This is one of the key things that Canon is #1 because we have a great kind of service setup. We have a great kind of install base. We have a great kind of partners, 180 plus partners handling 20,000 pin codes. We do service on 20,000 plus pin codes. So if I talk about business portfolio, in business portfolio, we have divided our business in 4 parts. If I talk about B2B, B2C, professional printing, and PSD. PSD is something where we talk about the consumers printing. So if I talk about B2B we have, so one thing I just want to tell you here, Canon is only the company which gives you all the related solution for the printing. From input solution to processing to output to management, everything in a single platform. Canon is only the company which gives you all the solution. So if I talk about B2B we have A3 MFDs, we have solution like Therefore, Uniflow. Therefore is a solution what we sell is a document management solution. Uniflow is something where it's a print management solution. We used to manage our printing, that how we can facilitate printing, who will print what, how to manage our print volume, how to manage our printing fleets, all those things are managed from there. Tungsten is something which is equivalent to PDF. Like it is a PDF where we can edit PDF, we can create PDF, we can make all the changes if we talk about it is related to PDF printing. We have scanners. In professional printing, we have large format, we have plotters, we have production machines. And if I talk about business to consumer, the heart of the Canon, from where Canon has emerged, it's
camera business. We have cameras, we have camcorders, we have high-end cameras, we have commercial cameras, we have consumer cameras. Every segment we are catering over here. And now if I talk about personal printing, so personal printing, most of you people might be using at your home or you're at your office, our A4 printer, our inkjet printers, our consumer scanners, all those things are provided by the Canon. So this is all about the portfolio of the Canon what we have. Again, if I talk about office solution, as I told you earlier, from printing solution to digitalization to security solution, we have everything. If I talk about scanners, we have document scanners, we have professional scanners, we have personal scanners, even though we have check scanners also, which are used nowadays in the banks. We have MFD, color MFDs, we have mono MFDs, we have Uniflow, as I told you, it's a print management solution. We have document management solution. This is something, these are the few models which I have highlighted over here. It is mainly focused to the MSME customers or the customer who are going for a business, who are going to support their business by the printing. So these are the major models. Although we have some 26 models, but here I have only shown 17 focus models. So if you see the depth of the products, from 22 ppm, from 20 ppm starting, we have 50 ppm machines. Beyond that, if we go, we have 100 ppm machine which comes into the professional printing. So these are the few models which are very much correlated with the MSME models or MSME customers or the customers who are willing to go along with the printing solution with Canon. Some of the scanners, as I told you, we have personal scanners, P208, 205, these are the scanners which you can carry in your laptop and which is powered by the USB. You can scan anywhere your document and you can send it across. We have departmental scanners like 225, 240, these are the scanners which are very much used in the offices or where we have a good amount of scanning documents in banks everywhere. So these are the 8 focus models, although we have 16 models, but these are the 8 focus models which are very much used in the market if I talk about commercial usage or SOHO usage. As I talked to you that apart from printing, we have solutions also. So input solution, we have Iris Power Scan where we can scan the documents and digitalize them and we can store it through our Therefore. Therefore is a solution where we can store our document, we can archive them, we can retrieve them anywhere on any of our device which is authorized for that. Uniflow is something where your document travels along with you. Whenever you are going to authorize yourself on any of your machines, it will give you the print. It gives you the authority to manage your printing, to manage your document, that who is authorized to print what, and who can access to which document. So these are the few solutions what Canon sells. So these are, so although we have many benefits associated with our printing solution and printers, because of which Canon is having, if I talk about all the brands, so Canon is the brand which is the costliest brand. But the way they produce their product, the way they give their services, the way they are reachable, they are serviceable, this makes us, the features which are there with our printing solutions or printing machines, this makes us #1. That's why we are, even though we are costlier, we are niche product, although we are having a good market share and we are the #1 leader in the market for printing solutions. So few of the features of our printing, like we have feature called ceramic heating, where printer on and off as per your usage, saving your electricity. We have other few features where we have enhanced security features, where our machine is, when the machine is getting on, it has a secure boot. So the firmware installed in the machine will detect whatever malware is there in the machine or not. Runtime protection, we have McAfee. So all these things are there with the machine. These are the few features what I just want to highlight over here. So my only theme is to say, if you have any, if you want to go with any printing solution, any sort of thing which is related to print, Canon is the brand where you can rely for any of your
ease or any of your usage. So saying this, if you are partnered with the Canon, your business is going to be very simple. So these are the few coordinates what I have given. If any support required for your ongoing business, or you are asking for any new product, or you are looking for any new solution, you can contact to us. Myself, I am from Canon. We have our partner, Xeon Digital in Noida. You can contact those people also. So these are the few coordinates. Not taking too much of time. Thank you very much once again for bearing me for this 10 minutes. Thank you very much. Thanks a lot, Nahid. सारे थोड़े थके थके लग रहे हैं. I can understand why, but we are very close to the dinner, so don't worry. And we have butter chicken also. If you're in Delhi NCR, you gotta have butter chicken, so we have got that for all of you. This is the last segment, but definitely not the least. It's very important that the businesses are empowered with the right partners when it comes to lending. When you have a good lending partner, you know that your business will stay afloat. You know that you will be able to turn your business into profits very soon. And the next session is just about that. IDBI Bank has introduced comprehensive suite of MSME focused offerings designed to empower businesses like yours. For the last session of the day, I'd like to invite Mr. Ramakrishna, Chief General Manager, IDBI Bank, and Mr. C.S. Arya, General Manager, IDBI Bank. This is going to be a very insightful session, and I request all of you to hold your questions about all the products after the session, and they will be here to entertain all of you. Thank you so much, gentlemen. Please. So, thank you, ET, for this wonderful evening. So, respected dignitaries and esteemed entrepreneurs, all the other partners, Canon, CRC, New India Assurance, and my dear colleagues from IDBI. So, good evening, everyone. So, IDBI, from IDBI side, so I would like to inform you that so when entire banking industry, MSME loan growth is happening around at 15%, IDBI's loan growth for MSME has grown 23% last year, and this year we are targeted to achieve 25% growth for MSME. So we have already started 200 specialized MSME branches for supporting MSMEs. So whatever products, we have already started digital products. One digital product we have started, which is complete digital journey that can be sanctioned within 20 minutes and that can be disbursed within one day. So that kind of products we are launching, and we have a very brief presentation. It will be quickly completed. So my colleague, Mr. Arya, will give this presentation. Thank you. I'll not take much time. Quickly, I'll tell what IDBI Bank is offering. IDBI Bank actually, pivotal tools offer all what MSME needs, be it financial needs, guidance, support, training, everything. For that, IDBI Bank is here. For that, what we are doing, we know the kind of contribution MSME is making to the economy. So our philosophy is that if we are supporting MSME, we are supporting future of this country. So for that, we are ready to support MSME at every stage. Some fellow panelists just said that MSME problem is the accessing credit. So for that, we know we have realized this gap. So for that, there are actually three issues. MSME is now, find it difficult to access credit, that too adequate credit and timely credit, and most of the time financial institutions or lenders are asking for collaterals. So for all these things, we have come out with a solution wherein MSME can access our product online from the convenience of their office and get access credit up to 25 lakh instantly without offering any collaterals. They even need not to visit our branches. So we have some of these kind of unique product which will help you, support you. And the gamut of products we have, now banks are offering 1 lakh to 100 crores of loan without collaterals. So whether you are traders,
dealers, manufacturers, self-employed, or providing services, we have products for everyone. You just need to visit us. We will offer you, we'll discuss with you whatever product you need, what is your requirement, be it credit, be it export, be it import, be it collection management, be it receivable management, be it payable management, we are here to support you. So some of the initiative recently which Gala sir has already told us that we have launched an MSME product wherein within 20 minutes you can get the loans instantly without visiting, instantly online. We are, just to create awareness. Somebody was telling that the people are not aware. There are lots of schemes are there. To create this awareness, we are conducting workshops, seminars, training for MSMEs. Then we have trade platforms where we are lending to MSMEs. We are the market leaders over there. We have, if you are buyers, we have solution for you. If you are suppliers, we have solution for you. Supply chain finance, we are the leader. Export credit facilities across big cities, we have dedicated officer to provide trade financing services to you. We have collateral free loans up to 10 crores. Then some of these products we have, I'm not going to discuss this in details. If you want, we can discuss once this event is over. We can discuss over there. These are of the offerings: bank guarantees, collateral free loans, LLC, VGs, foreign currencies. We have capability of, providing solution in more than 100 currencies. We can provide solution. These are some of our flagship products: Property Power, MSME Express, Sahaj Vyapar, Udyami, GST Plus. Then we have WHR, Finance Against Commodities. Some of the other products. These are the details of those products. I am not going to discuss in details. So basically what we wanted to inform is that whatever products they are shown here, so like GST Plus, it is for the all MSMEs, those who are filing GST. So they can easily access for this GST Plus product, and again for traders, Sahaj Vyapar product, and again Property Power. If you have a property, but if you don't want to show the DP and all, so you can go for that Property Power. So we have got again that service sector, and again for professionals, self-employed professionals, non-professionals, everyone there is a product. And again we have a cluster specific products. So, and again, whatever IMSME Express we have discussed about, so this is the digital product we have launched last 1 year, April 2025. So this is the product which has been very popular now among all the MSMEs. So up to 25 lakh, within 20 minutes, sanction will be given, and within 1 day disbursement will be done. So from the customer end, they can through their mobile, through their laptop, they can apply for the loan, and 20 minutes sanction will be given. So this kind of digital adoption we have already taken. So whatever products we have done. So again, the USP of IDBI is the service. So, and again, the quick turnaround time, we will sanction the loan and we will disburse the loan. For this, we have dedicated centers across India who dedicatedly service the MSMEs only across India. To show our, commitment to MSMEs, we have recently sanctioned some of the credit facility to some of our customers. So I would like to call Gala sir here, who can hand over the sanction letter to them. So I'll request Gala sir. I'll request the Mr. Mandeep Gupta from Galaxy Agencies. Mr. Mandeep Gupta. Mr. Anil Kumar Bansal from Savaria Polymer. Mr. Ganesh Sharma from G Sports. Mr. Jitin Kumar, Sri Radhe Plywood. Mr. Manish Agrawal, Ane Associates.
Mr. Manish Agrawal, Mr. Awain Mohammad Prasad, DSS in Infracon, Mr. Sarda Jain, Miss Sarda Jain, Sarda Enterprise. Miss Rajani Cain, Cain India. I think she would be the best person who can tell about IDBI, how was her experience with IDBI Bank. Please. Good evening, everyone. My name is Rajni from Canes India Electric Scooter Showroom. मैं पिछले 5 साल से इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम रन कर रही हूँ और इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में मेरा एज अ लेडी होना एक बहुत ही अजीब लगता है लोगों को. तो अपनी गोल्ड ज्वेलरी और कुछ सेविंग से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था एंड देन IDBI का साथ मिला, मुझे कोलेटरल फ्री लोन दिया इन्होंने मुझे. 5 लाख से शुरू हुआ था एंड देन अभी 25 लाख का, जैसे कि सर ने अभी मुझे बताया, 20 मिनट्स में लोन सेंशन हुआ और विद इन 1 डे सेंशन होकर के मेरे अकाउंट में आ गया. अब इससे मैं अपना बिजनेस एक्सपेंशन कर सकती हूँ और भी आगे काफ़ी सारे प्लान्स हैं. तो ये सिर्फ जो भी हुआ वो सारे का सारा IDBI बैंक के सपोर्ट से हुआ. इसके बिना मैं शायद अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकती थी. शुरू में मेरे पास 1 शोरूम था, अभी मैंने 2 शोरूम कर लिए हैं. आगे फ्यूचर्स के प्लान भी हैं मेरे. तो वेरी बिग थैंक्स टू यू सर एंड अंशुल सर जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, गाइडेंस दी मुझे, एंड ब्रांच हेड सर, थैंक यू सो मच. तो मैं कहना चाहूँगी IDBI बैंक के जितने भी सर हैं, ब्रांच हेड और सारे लोग, वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही सपोर्टेड हैं. वो अपना लंच भी डिले करते हैं, उनके फ्रूट्स रखे हो वो भी नहीं, उन्हें पहले काम करना है कि पहले एक जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट दी जा रही है, बैंक की तरफ से सपोर्ट दी जा रही है, वो एंड यूज़र को मिलनी चाहिए. तो ये चीज़ बहुत अच्छी है. तो यहाँ पे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर दो शिद्दत से उछालो यारो. तो थैंक यू सर. Thank you. Thank you to the IDBI team. I'm glad that behind the products there are always human stories, and as we all know, business लोगों से बनता है. Craft में भी heart होना बहुत ज़रूरी है. So I'm glad that we have all learned something today. And with this, we conclude the Economic Times Make in India SME Regional Summit Noida edition. Held in association with IDBI Bank as our banking and lending partner, the New India Assurance Company Limited as the general non-life insurance partner, Canon as our tech enabler, and CRC as our reality partner. Thank you once again for everyone for showing up tonight and supporting the MSMEs in Noida. We'll see you in the next edition. Good night and have a great time.